हेलो पीपल, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आशिक बीजू। गुड आफ्टरनून खुशबू राणा। हेलो, गुड आफ्टरनून महेश रेड्डी। गुड आफ्टरनून सौरभ मंडल। कैन यू प्लीज वेरीफाई that whether I'm audible or not? Good afternoon, people. Good afternoon, people. Audible. All clear. Perfect, perfect, perfect. Chalo. So let us start revising whole calculus. Calculus के सारे formulas और सारे tricks. All the formulas and all the tricks of calculus we are going to do today. But before we go ahead and do all the formulas and tricks of calculus, let me introduce myself. I'm Marut Tiwari. I have done my MTech from IIT Kharagpur. I have been a topper in 2013 batch. I have also authored the book GATE in 75 Days, and from last 10 years, I have been teaching, mentoring, guiding to GATE and ESE aspirants from all over India. So far, if I roughly estimate it, then I have taught more than 35,000 aspirants so far in last 10 years. So here we go. This is all about me. On Unacademy, you can follow me at Marut Life, MARUTLIFE. Just go to Unacademy and search for my profile, Marut Tiwari, and there you can follow. Unacademy learners have showered a lot of love, lot of trust, lot of faith in me. 76 million वॉच मिनट्स के साथ लगातार अनअकैडमी पर लेजेंड टैग के साथ लर्नर्स ने मुझ पर फेथ और अपना प्यार जता कर रखा है. थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस एनकरेजमेंट. दिस रियली मीन्स अ लॉट. यही आपका जो भरोसा है, इसी वजह से मैं और मेहनत करने के लिए और ज्यादा रात रात में, कल भी रात में मैंने 2 बजे कैलकुलस की सारी प्रैक्टिस शीट्स भेजी हैं, कैलकुलस के सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भेजे हैं. तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ लर्नर्स का एनकरेजमेंट है, लर्नर्स की तरफ से आने वाला जो प्यार और भरोसा है, उसके कारण ही ये संभव हो पाता है कि मैं इतनी मेहनत करने के लिए उत्साहित हो पाता हूं, मोटिवेट हो पाता हूं. थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन दिस जर्नी विद मी. स्टार्ट करते हैं कैलकुलस. कैलकुलस के इस पूरे कोर्स को, कैलकुलस के इस पूरे मैराथन सेशन को हम करने वाले हैं 4 चैप्टर्स में. सबसे पहला चैप्टर होगा डिफरेंशियल कैलकुलस, और उसके बाद, एंड डोंट वरी अबाउट इंग्लिश, आई एम गोइंग टू रिपीट ईच एंड एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश. व्हाटएवर आई स्पीक इन हिंदी, I will be repeating it in English. Okay, so don't worry about it. Hello people, good afternoon, good afternoon, good afternoon. So here we go. Chapter number 1, and chapter number 1 is differential calculus. Differential calculus has number of important topics. Differential calculus में बहुत सारे important topics हैं, और हम start करने वाले हैं differentiation के साथ. And we are going to start with differentiation. So differentiation is what? डिफरेंशिएशन, या फिर आप उसे डेरिवेटिव भी कहते हो. You also call it derivative. So what exactly is differentiation? You see, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे वेरिएबल ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं. तो एक को हम कह देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरे को हम कह देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा भी हो सकता है. वो e पावर x हो सकता है, वो x स्क्वायर हो सकता है, वो sin x हो सकता है, cos x हो सकता है. The dependent variable y
maybe depending upon x in number of ways. Maybe it's depending as y is equal to x square. Maybe it is depending as y is equal to sine x, y is equal to cos x, y is equal to e power x, y is equal to log of x. There are a number of ways available. And at times we are interested in finding out the change in y corresponding to the change in x. हम जानना चाहते हैं कि x में कितना चेंज होगा तो y में कितना चेंज होगा, x में कितना चेंज होगा तो y में कितना चेंज होगा। अगर ये बात हम किसी पॉइंट P और Q के बीच में फाइंड आउट करें कि P और Q के बीच में x में कितना चेंज हुआ और y में कितना चेंज हुआ, what is the change in y and what is the change in x के corresponding y में कितना चेंज हुआ। ये Q पॉइंट हमने यहाँ पर मान लिया है, this is Q point. But why are you writing Q1, sir? I will tell why I am writing Q1, don't worry. So I can very clearly see that the gradient, the slope, the change in y with respect to change in x, the change in y with respect to change in x, I can define between P to Q1, and that's going to be something like this. But if I define the same rate of change of y with respect to x between P and Q2, if I define that rate of change between P and Q2, then this delta y upon delta x is very clearly some other value. So if I take that final point Q2 at some other point, if I define that change in y with respect to change in x, अगर मैं y में change x के respect में define करूं, initial point वही रखा है मैंने P, लेकिन final point इस बार मैंने change कर दिया है Q2। तो आप बहुत clearly देख सकते हो that black वाले delta y और black वाले delta x से और red वाले delta y और red वाले delta x से दोनों से define किया हुआ y का gradient different है। The gradient of y with respect to x defined between black delta y and black delta x and defined between red delta y and red delta x, they are not really equal. And therefore, people said that in a nonlinear curve, they are always going to be different depending upon your selection of the final points. एक नॉनलीनियर कर्व में आपका फाइनल पॉइंट Q1 है तो कुछ और मिलेगा, फाइनल पॉइंट Q2 है तो कुछ और मिलेगा, फाइनल पॉइंट Q3 हो तो कुछ और मिलेगा, and therefore it's better to define the gradient at a point. Since they are not equal, it's better to define the gradient at a point. It's better to define the gradients at a point. Now this is little contradictory. Since जब आप बोलोगे gradient तो उसका मतलब है change in y upon change in x, लेकिन आप कह रहे हो at a point. अब एक ही पॉइंट पर चेंज कैसे हो सकता है? उसके लिए what we are going to do is we are going to select a point very close to P, and then we are going to define delta y by delta x, and we will say that since the point has been selected so close to P, therefore we can call that this gradient is belonging to exactly at point P, because the final point is almost exactly where the point P is, क्योंकि final point वही है जहां पर initial point लगभग, इसलिए मैं इसे कह सकता हूं कि ये point P पे gradient है. So what I'm going to do is I'm going to define delta y by delta x at point P in a manner that the final point has been taken almost exactly where the initial point is. Final point को लगभग initial point पर ही select कर लिया.
और आप नोटिस करोगे कि ऐसा करते ही जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होगा वो कहीं ना कहीं टेंजेंट, उस पॉइंट की टेंजेंट का स्लोप देने लग जाएगा। अगर आप फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट के बिल्कुल पास सेलेक्ट करने वाले हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स उस पॉइंट की टेंजेंट का स्लोप या tan थीटा डिफाइन करने लगेगा। सो इसको बार बार ऐसे लिखना कि यार मैंने डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डिफाइन किया है सच दैट चेंजेस को बहुत छोटा रखा है, ऐसे लिखने के बजाय एक नया सिंबल दे दिया गया dy बाई dx एंड बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि वो उस पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप के इक्वल है। It's equal to the slope of the tangent at that point, and instead of writing this whole complex expression, limit delta x has been kept very small when we defined gradient. People gave it a new name, and that new name is dy by dx. This dy by dx is called as differential coefficient. This dy by dx is called as derivative of y with respect to x. इस dy by dx को कहते हैं y का differential coefficient. इस dy by dx को कहते हैं y का x के respect में derivative. So, if y is depending upon x power n, if y is depending upon x power n, if y is depending upon sin x, if y is depending upon e power x, how do we differentiate them? If y is depending upon e power x, if y is depending upon sin x, if y is depending upon cos x, how do we differentiate them? My dear friends, the process is very simple. The process is very simple. The process is this. अगर डिफरेंशिएट करने के लिए फंडामेंटल प्रोसेस आपको यूज करना हो तो प्रोसेस बहुत ही आसान है। The process is very simple if you have to use the fundamental first principle to differentiate the things. Stay tuned till the last moment of this video if you want your mathematics to be very strong, because mathematics is the foundation of entire engineering. Mathematics represent those bricks and that cement which has been used to build the foundation. बिना नींव के कोई भी इमारत मजबूत नहीं हो सकती। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमारत, इंजीनियरिंग की इमारत ऐसी मजबूत और शानदार बने कि दुनिया देखती रह जाए, तो आपको मैथमेटिक्स रूपी ये नींव बहुत मजबूत बनानी होगी. You will have to make this foundation very strong. This mathematics, foundation of mathematics, if you want the building of your engineering to be grand and having an unmatchable strength. So how do you define derivative? Just the way you have defined derivative, we can very clearly see that we have taken one small little change in x, and we have taken one small little change in y, and we are defining delta y upon delta x. If this final point happens to be very close to initial point, then we can also see that delta y by delta x is representing the same thing as the angle of the tangent. तो आपने एक बहुत छोटा y ले लिया और एक बहुत छोटा x ले लिया और उनके रेशियो से आप डिफाइन कर देते हो ग्रेडियंट. हम देख सकते हैं कि अगर q को p के बहुत पास ले आया जाए तो डेल्टा y बाई डेल्टा x tan थीटा को रिप्रेजेंट करने लगेगा. Then delta y by delta x will start representing tan theta. So how do you differentiate all these functions? Very easy. Let me take y is equal to x cube to demonstrate. If y is equal to x cube, then y को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, x को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो y भी थोड़ा सा बढ़ेगा. Agree? And then मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं expand कर सकता हूँ. This I can expand y plus delta y, and this I can expand x cube plus
delta x cube plus 3x square delta x plus 3x delta x square. Now, my dear friends, since delta x is very small, higher powers of delta x will become 0. And if higher powers of delta x become 0, and y I can replace as x cube, y को मैं x cube replace कर सकता हूँ, then there is only one term remaining in the right hand side. Once again, x cube and x cube get cancelled. I get delta y is equal to 3x square delta x. I can write delta y delta x is equal to 3x square. Similar pattern can be followed to define the derivative of y is equal to x power n. If there is y is equal to x power n, then the derivative will be equal to n will come. Look, x cube became 3 came out and 1 power became smaller. And then you have 1 power smaller. So x power n will become n x power n minus 1. Oh, so this is how that standard formula जो हमारे गले में ठूसा गया है लगातार, उसको इस तरह से वहां तक पहुंचा जाता है. बिल्कुल. अब ऐसे ही y is equal to e power x के लिए आप देख सकते हो. फिलहाल e power x का एक एक्सपेंशन होता है 1 plus x upon factorial 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 plus x power 4 upon factorial 4. अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, if I differentiate dy by dx, I'm going to get d by dx of constant. अब constant में तो कोई चेंज नहीं होगा, जाहिर सी बात है, और x में x का d by dx of x upon 1 factorial and then x square का d by dx upon 2 factorial, then so on and so forth. कांस्टेंट में होने वाला चेंज 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी अभी आपने देखा है 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल. ऐसे ही x क्यूब का डेरिवेटिव होता 3x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल. 2 और 2 फैक्टोरियल कैंसिल होंगे, 1 फैक्टोरियल बचेगा. 3 और 3 फैक्टोरियल कैंसिल होंगे, 2 फैक्टोरियल बचेगा. एंड वेरी सरप्राइजिंगली फिर से एक बार x e पावर x का ही फिर से एक बार e पावर x का एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाता है. Once again you have the expression of e power x coming into the picture. So the derivative of e power x will be e power x. I'm going to follow the same funda as the first one to get this, that if x is changed to x plus delta x, y will become y plus delta y. Now I can substitute y is equal to sin x, and if I substitute y is equal to sin x, I'm going to get sin x plus delta x minus sin x as the change in y. Y में change हो जाएगा sin x plus delta x minus sin x. आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है. नहीं जानते, आज से जान लीजिए. sin a minus b होता है, sin a minus b होता है sin a plus sin a minus sin b is going to be equal to cos a plus b by 2 and sin a minus b by 2 multiplied by 2. इसको समझने के लिए और इन फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो आपको याद रहनी चाहिए. sin a minus sin b, sin a plus sin b, cos a plus cos b and cos a minus cos b. Sin a plus sin b, sin a minus sin b. Then sin आएगा और cos आएगा, sin आएगा और cos आएगा. cos a plus cos b है तो दोनों cos आएंगे, और cos a minus cos b है तो दोनों sin आएंगे. Then there will be both sin values.
अब a प्लस बी अगर है साइन में तो इधर साइन में a प्लस बी रहेगा और cos में a माइनस बी रहेगा। साइन a माइनस बी है तो साइन में a माइनस बी रहेगा और cos में a प्लस बी रहेगा। cos a प्लस cos b है तो दोनों cos रहेंगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता किसमें प्लस लिखा आपने किसमें माइनस लिखा। cos a माइनस cos b है तो साइन ही रहेंगे दोनों, दोनों में माइनस, किसमें माइनस किसमें प्लस आप लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। Of course there will be two, there will be two, there will be two, there will be two. So my dear friends, ये ट्रिक्स याद रख लो आप। साइन है अगर दोनों तो साइन कॉस साइन कॉस, कॉस अगर प्लस में है तो कॉस प्लस कॉस becomes cos cos, and cos minus cos, cos doesn't remain, cos plus cos becomes cos cos, and cos minus cos becomes no cos। cos plus cos है तो cos cos, cos minus cos है तो cos cos होता। If there is cos plus cos, you'll have two cos, cos plus cos, two cos, and if you have cos minus cos, they get cancelled and cos totally disappears. In sine you are going to have sin cos both the times, okay? And if there is plus here between sines, there will be plus here between sines. There is minus between sine and sine, then minus will be between sine and sine. So I hope you will remember this. Now coming back to this one, sine A minus sine B, I can write it 2 sine A minus B by 2 and cos A plus B by 2. Cos A plus B by 2, this is delta y. Now this becomes, x gets cancelled, this becomes sine delta x by 2 and this becomes cos 2x by 2. ध्यान से समझियो, this becomes sine delta x by 2 and this becomes cos 2x upon 2 becomes x, and apart from that I have delta x by 2. For very small changes in x, sine delta x will become delta x. For very small changes in x, sine delta x will become delta x, and for very small changes in x, delta x को x के terms में neglect कर सकते हैं. So I will be having x. My dear friends, I get delta y upon delta x is equal to cos x. So you can pretty much find out the derivative of any given function in fundamental way like this. So far we know some fundamental functions, like if there is y is equal to x power n, then its derivative is going to be nx power n minus 1. If there is y is equal to e power x, then its derivative is going to be e power x only. If there is derivative of y is equal to sin x, its derivative is going to be cos x. And similarly, जैसे हमने sin x के लिए किया है, वैसे ही cos x के लिए कर सकते हैं. Just like we have done for sin x, similarly you can do for cos x, and that will be equal to minus sin x. We start with these 4 fundamental formulas, and after that it's time to learn about some rules. It's time to learn about some fundamental rules. ये 4 डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज हमारे पास है. अब समय आ चुका है कि हम कुछ फंडामेंटल रूल्स के बारे में समझें. ध्यान से समझियो. So we have learned about, सर MD कब लीजिएगा? सजन रोश is saying speak in English please. Sajan Rosh, I'm repeating each and every sentence, each and every statement in English. So do not worry. I'm taking care of everyone who is watching. I'm just making it a little comfortable for Hindi speaking students also. But I'm repeating each and everything in English. Do not worry.
चिंता बिल्कुल मत करें, हर बात मैं हिंदी इंग्लिश में रिपीट करूंगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, डोंट वरी। Okay, here we go. So now is the time to learn about some fantastic rules. What are these rules? Well, sometimes we are going to have the function becoming a product of two functions. कई बार ऐसा होगा कि फंक्शन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट बन जाएगा, एंड देन फंडामेंटल रूल फॉलो करेंगे दैट अगर x में चेंज हो गया x प्लस डेल्टा x, ये ध्यान रखना u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, u और v दोनों x के फंक्शन है, जैसे x क्यूब साइन x आप करते हो, या x पावर 5 cos x, या x multiplied by e power x, maybe x cube multiplied by sin x, x power 5 multiplied by cos x, x multiplied by e power x, like that. When x changes to x plus delta x, u changes to u plus delta u, v changes to v plus delta v, and y changes to y plus delta y. So I'm going to I just write the changed value of y, and the changed value of y is going to become u plus delta u multiplied by v plus delta v. Multiplied by v plus delta v, I get the product uv and then u delta v and then v delta u and then delta u delta v. My dear friends, now I put the value of y as uv, and I also, in the right hand side, I ignore the product of two small quantities. दो स्मॉल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यूवी ने यूवी को मार दिया, यूवी ने यूवी को मार दिया। अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, मुझे मिल जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, यहां मुझे मिल जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा x, और यहां मुझे मिल जाएगा डेल्टा u बाई डेल्टा x। माय डियर फ्रेंड्स, आज के बाद से आपको प्रोडक्ट रूल सिर्फ रटा नहीं हुआ है, आपको प्रोडक्ट रूल का पैदा होना मालूम है। प्रोडक्ट रूल सिर्फ रटा नहीं हुआ है आपको, यू आर नॉट सिंपली मेमोराइजिंग द प्रोडक्ट रूल, you are now creating the product rule starting with fundamental basic principle of differentiation. Wow, conceptual learning has no match. Conceptual learning has always been unmatchable, is unmatchable, and will remain unmatchable. Learn to not only memorize the formulas but learn to create them. आप पैदा करने वाले उन सारे फॉर्मूलाज को। तो जब भी एक फंक्शन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा, तो आप पहले फंक्शन को ऐसे ही रखें, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, और फिर दूसरे फंक्शन को ऐसे ही रखें, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। Then you keep the first function, differentiate the second function, and keep the second function and differentiate the first function. This is known as product rule. But sometimes your function may be the quotient of two functions. U is also a function of x and v is also a function of x. And आपका जो y function है वो x के दो functions का ratio है. The function y is the ratio of two functions of x, the u function and the v function. Now once again I put the same condition that when x changes to x plus delta x, u changes to u plus delta u, v changes to v plus delta v, and y changes to y plus delta y. So I'm going to write the changed value of y is equal to the change value of u plus change value of v. I'm interested in only the change of y, and that will become u plus delta u upon v plus delta v minus y, but the original value of y was u upon v. Now I multiply v multiplied by u plus v multiplied by delta u minus u multiplied by v minus
u multiplied by delta v upon v, and then अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और आपको मिलेगा v square plus v delta v, or you can simply write v outside and v plus delta v. मेरे प्यारे दोस्तों, uv में uv को मार दिया, uv and uv they cancel each other, and v के comparison में delta v is very small. So I can write delta y is equal to v delta u minus u delta v upon v square. अगर मैं delta x से divide कर दूं, if I divide by delta x, I'm going to get delta u by delta x minus u delta v by delta x upon v square. मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कभी दो फंक्शंस के रेशियो से एक तीसरा फंक्शन बना हुआ हो तो आप ये रूल यूज करने वाले हो. इस रूल को कहते हैं क्वोशिएंट रूल. This rule is known by the name quotient rule, and we are going to use this rule whenever there is a function that's defined as the ratio of two functions. So this rule is known by the name quotient rule. Denominator, keep the denominator and differentiate the numerator, minus, keep the numerator and differentiate the denominator, and then divide by denominator square. This is called as quotient rule. So far, we have not talked about other trigonometric functions like tan x, cot x, sec x, and cosec x. We know how to differentiate. We know how to differentiate these fundamental functions. We know how to differentiate x power n, we know how to differentiate e power x, we know how to differentiate sin x, and we know how to differentiate cos x. चार स्टैंडर्ड फंक्शंस के फॉर्मूलाज हमें पता है, लेकिन tan x के बारे में क्या ख्याल है, cot x के बारे में क्या ख्याल है, उसके लिए हम फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं यूज करने वाले हैं. For that we are not going to use fundamental principle. अगर आपको tan x को डिफरेंशिएट करना हो तो आप tan x को sin x upon cos x लिख सकते हो, sin x upon cos x लिख सकते हो. क्या बोला मैंने? Keep the denominator, differentiate the numerator, minus, keep the numerator, differentiate the denominator upon डिनोमिनेटर स्क्वायर. डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखें, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करें, माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही रखें, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. दोस्त, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, एंड cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x, and then entire numerator is going to become cos square x plus sin square x. बचपन से लेकर आज तक 56 बार आपने सीखा है that sin square x plus cos square x होता है 1. 56 times you have learned since childhood that sin square x plus cos square x is equal to 1. So it becomes 1 upon cos square x, and you get sec square x. Similarly, my dear friends, you can differentiate. Similarly, you can differentiate cot x. Similarly, the derivative of cot x is going to become equal to minus cosec square x. And then we can differentiate then we can differentiate sec x. So let's quickly differentiate sec x. Sec x means what? Sec x can be written as 1 upon cos x. And sec, hello. 4 घंटे 4 chapters whole calculus, 4 hours 4 chapters whole calculus, every single concept and every single trick we are going to revise, and we are going to lock the so-called subject, so-called 20% syllabus of engineering mathematics. Engineering mathematics का 20% syllabus 4 घंटे 4 chapters एंड फुल लॉक करने वाले हैं हर कंसेप्ट हर ट्रिक के साथ. सो
1 upon cos x, keep the denominator, differentiate the numerator, minus, keep the numerator, differentiate the denominator upon denominator ka square, upon the square of denominator. Now first term becomes 0, second term becomes sin x upon cos square x, sin x upon cos x becomes tan x, and 1 upon cos x becomes sec x. I get the derivative of sec x as sec x tan x. Similarly, my dear friends, similarly you can do the derivative of cosec x. जैसे हमने sec x का डेरिवेटिव किया है वैसे ही आप cosec x का डेरिवेटिव कर सकते हैं, और वो ये होगा. अब आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में 4 और जुड़ गए. पहले आपने x पावर n, e पावर x, sin x और cos x 4 किए थे, और अब 4 और जुड़ गए, tan x, cot x, sec x, cosec x. मजे की बात यह है कि कभी अगर आपको फॉर्मूला याद ना आए तो आपको पता है कि आप 10 सेकंड में फॉर्मूला रिप्रोड्यूस कर सकते हो, चाहे वो इनमें से कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन हो. No matter which standard function you are talking about, you can always reproduce the formulas within a matter of 10 seconds. 10 to 20 seconds and you can get this. Derivative of tan x, sec square x. Similarly, derivative of cot x will be minus cosec square x. Derivative of sec x is sec x tan x. And similarly, derivative of cosec x will be minus cosec x cot x. Cool. क्या ही तो बात है. Now I take you to one more rule. अभी तक 8 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज और 2 रूल्स कौन से? प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल. अब मैं आपको एक रूल पर और ले चलता हूं, दैट अगर कभी आपके सामने ऐसा आ जाए sin 5x plus 9 power 4, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करने वाले हो? अगर आपके सामने कभी ऐसा आ जाए y is equal to e power cos x, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करने वाले हो? Then how you are going to differentiate the things? If you ever get such an expression, y is equal to sin 5x plus 9 power 4, y is equal to e power cos x, then how are you going to differentiate? Well, my dear friends, the rule is simple, that first you differentiate it like sin x only, then you differentiate that something, just like sin x ka derivative is cos x. Similarly, you are going to differentiate it like sin something is cos something, then you differentiate that something again. It's like this. I'll tell you that replace this 5x plus 9 power 4 as 5x plus 9 power 4 as z. Then you are essentially differentiating sin z. But problem is that you are doing dy by dz, and dy by dz will become cos z. But what we want dy by dx. तो अब dy by dx तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? dy by dx तक पहुंचने के लिए z जिसको आपने माना है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा. The value which you have assumed as z, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में. Something power 4 becomes 4 something power 3, और फिर से 5x plus 9 को डिफरेंशिएट करोगे 5 आ जाएगा. If you differentiate 5x plus 9, you will get 5. Now, once you get dy by dz and dz by dx, you can very clearly see that dy by dx will be simply the product of these two. Dy by dx will be simply the product of these two. Cool? So, I can write dz by dx value. I can write dy by dz, which is cos z. Z is nothing but 5x plus 9 power 4, and then z is differentiated with respect to x again, like this. This becomes the final answer.
I'll repeat one more time that simply treat it like y is equal to e power z. Then derivative of y with respect to z must have been like this. But z is what? Z is cos x. So what is the derivative of z with respect to x? Derivative of z with respect to x is sin x. But we are interested in what? Are we interested in dy by dz? No. We are interested in dy by dx. हम तो dy by dx में इंटरेस्टेड हैं. तो dy by dx क्या हो जाएगा? dy by dx चाहिए तो dy by dz और dz by dx को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो. dy by dz आपको पता है e पावर z और dz by dx आपको पता है माइनस साइन x. Final answer will be minus sin x and e power cos x. These are, I know these are some very simple initial things, but don't worry. We will proceed into much complicated things. ये बहुत simple initial बातें हैं, लेकिन हम धीरे धीरे complexity बढ़ाते जाएंगे. यहां से इन दोनों प्रॉब्लम्स को करने के बाद हमें एक रूल कंक्लूड करना है और वो रूल कहलाता है चेन रूल. दैट अगर आप e पावर समथिंग को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो e पावर दैट कर दें. e पावर समथिंग को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वैसे ही डिफरेंशिएट करें जैसे आपने e पावर x को डिफरेंशिएट किया होता. ओके, बस cos x का डेरिवेटिव फिर से लिख दें बगल में. इसे कहते हैं चेन रूल. दिस इज नोन बाय द नेम चेन रूल. Cool. So using this chain rule, can we find out the derivative of much complex functions? Like if I take y is equal to e power root over cos x, then what will be dy by dx? पहले e power something का derivative e power something हो जाता है. तो I'm going to write it. e पावर समथिंग का डेरिवेटिव e पावर समथिंग हो जाता है. आई एम गोइंग टू राइट इट. फिर वो जो समथिंग है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा. देन दैट समथिंग यू विल हैव टू डिफरेंशिएट अगेन. अब रूट समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट समथिंग का डेरिवेटिव होता है x पावर 1/2 का डेरिवेटिव, 1x पावर 1/2 का डेरिवेटिव n x power n minus 1 and x power minus 1/2. So this becomes 1 upon x power 1/2. This becomes 1 upon 2 root x. अब फिर से एक बार चेन रूल लगेगा. एक बार आपने चेन रूल अप्लाई कर दिया और फिर से एक कड़ी और बनानी पड़ेगी आपको. Once you have applied chain rule, now you will have to add one more link. That how you are going to differentiate d by dx of root something. Root something derivative is 1 upon 2 root that. So 1 upon 2 root something. But that something must be differentiated again. But that something must be differentiated again. Final answer is going to be e power root cos x multiplied by 1 upon 2 root cos x multiplied by minus sin x. This is going to be the final answer. So I just hope that you will never struggle in chain rule any further. This is called as the third rule of differentiation, the chain rule. इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन का तीसरा नियम, और डिफरेंशिएशन का तीसरा नियम है चेन रूल. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. बी very attentive people, huh? Now, you must be wondering that we have so far not tried differentiating log x. We have not tried differentiating log x. And we have not tried differentiating a power x. And we have not tried differentiating log x at some other base than e. We can differentiate them very easily using the chain rule. Fundamental principle use करने की जरूरत नहीं है.
there is no need to use the first principle, fundamental way to differentiate. Okay? If y is log e power x, then x can be written as e power y. Differentiate this with respect to x. And if I differentiate this with respect to x, then using the chain rule, I will have to differentiate that something again. y को अगर log x लिखा है तो x को लिख सकते हैं e पावर y. अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो x का डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में e पावर y का डेरिवेटिव e पावर y बन जाएगा. y को आपको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा यूजिंग चेन रूल. ये बन गया 1 एंड I have e पावर y and dy by dx. well dy by dx में ही तो इंटरेस्टेड है हम, वो हो जाएगा 1 upon e पावर y. But e power y is nothing but x. E power y is nothing but x. This gives me goosebumps. जो फॉर्मूला आज तक आप रटते आए थे उसको आपने 20 सेकंड के अंदर अंदर प्रोड्यूस कर दिया. The formula that you have only mugged up, you produced that whole formula in a matter of 20 seconds. In a matter of 20 seconds, you produced that formula. My dear friends, here we are going to assume that let's say a is equal to e power c, and if I assume a is equal to e power c, then this will become e power cx, e power cx. Now I know how to differentiate this. E power something derivative will become e power that. Just differentiate that something again. Then I'm going to get e power cx, and derivative of cx will become c multiplied by 1. So I get final answer as c multiplied by e power cx. But if a is equal to e power c, if a is equal to e power c, then if I take log both sides, c will become ln a, and e power cx is nothing but a replacement of a power x. तो c का वैल्यू रख दिया मैंने, c का वैल्यू हो जाएगा ln a, और e power cx is the derivative of a power x. e power cx is the replacement of a power x. Final answer I have, जो फॉर्मूला आज तक आप रटते आए थे वो फॉर्मूला आपने 20 सेकंड में प्रोड्यूस कर दिया. The formula that you have been memorizing since your childhood, that formula you have produced in a matter of 20 seconds. Last one, log x base a. If y is log x base a, then x can be written as a power y. If I differentiate this with respect to x, then a power y will become a power y ln a, but that y must be differentiated again. Chain rule use किया मैंने plus पिछला result use किया. I'm using the last result here, the previous result, and then I'm using the chain rule. पहली बात, अगर y है log x base a तो x को लिखा जा सकता है a power y. दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, पिछला रिजल्ट अभी अभी जो रिजल्ट हमने डिराइव किया उसको यूज किया. The result that we have derived we use here. This becomes 1. This becomes 1, and then we have a power y ln a dy by dx. Then dy by dx becomes equal to 1 upon a power y ln a. A power y is nothing but x. A power y is nothing but x. आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में 3 और ऐड हो गए. In your standard formulas, 3 more have been added, namely log x base e, and then a power x, and then log x base a. In your standard formulas, 3 more results have been added. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. Using the chain rule, we can even differentiate inverse trigonometric functions. Like you think about sine inverse x, and you think about
you think about cos inverse x and you think about tan inverse x. If y is sine inverse x, then x can be written as sine y. I differentiate this. Then differentiation of sine y will become cos y. Using the chain rule, y must be differentiated again. क्या यूज किया मैंने? चेन रूल यूज किया मैंने. तो यहां से बहुत क्लियरली ये हो जाएगा 1 एंड यहां हमारे पास है cos y और dy by dx. dy by dx मिल जाएगा मुझे 1 अपॉन cos y. अब अगर sin y की वैल्यू है x तो cos y की वैल्यू क्या होगी दोस्त? If sin y is x, if sin y is x upon 1, then cos y will become what? If sin y is x upon 1, then cos y will become under root 1 minus x square upon 1. cos y की वो वैल्यू यहां पर रख दें. ओ भाई 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 भाई, इतना सिंपल होता है ये सब कुछ. All these things are so simple. I mean, I always thought that derivative of sine inverse x, finding the derivative of sine inverse x, deriving the derivative of sine inverse x must be some NASA thing. Sine inverse x का तो फॉर्मूला मैंने याद कर लिया था सर. मुझे लगता था कि उसका डेरिवेटिव डिराइव करके फाइंड आउट करना तो मतलब नासा वासा में ही होता होगा ये सब. No sir, it's easy and can be done just like that. Y is equal to tan inverse x, then tan y becomes x, and if I differentiate this, then tan y derivative becomes sec square y, and chain rule use करेंगे फिर से. y को differentiate करेंगे, x का derivative बना 1, x derivative is becoming 1. I get dy by dx is equal to 1 upon sec square y, 1 upon sec square y. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. Now, if tan y value is x, if tan y value is x, if tan y value is x, what will be the sec y? Sec y will be hypotenuse upon base. Sec y will be hypotenuse upon base. Put the value of sec y and you are going to get dy by dx is equal to 1 upon 1 plus x square. आज के बाद से आपको पता रहना चाहिए, आज के बाद से आपको पता रहना चाहिए tan inverse x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square. Similarly, cos inverse x can be written as minus 1 upon under root. Same thing with minus sign. Same thing that we have derived for sin inverse x with minus sign. So these were all the fundamental derivative formulas. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. ये तो हो गया differentiation का process. But sometimes you are going to get some very complicated functions like e power x multiplied by sin 3x upon under root x square plus 1. How do you deal with such functions? आसान है सर. Quotient rule use करेंगे, Quotient rule use करेंगे और उसके बाद product rule से numerator का अलग से derivative find out करेंगे. It's easy sir. All I need to do is, if I'm going to find out dy by dx, keep the denominator, differentiate the numerator minus, keep the numerator, differentiate the denominator, and this total thing upon denominator square. ये है आम जिंदगी.
ना वफा होगी ना वफा के बाद होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी। क्या ही तो बात है। फॉर्मूलाज विद आयुष, जबरदस्त। सर हिंदी में बोलिए, समझ नहीं आ रहा। ओ भाई भाई भाई, कुछ लोग कह रहे हैं हिंदी में बोलिए, कुछ लोग कह रहे हैं इंग्लिश में बोलिए, जबकि मैं दोनों में प्रॉपरली रिपीट कर रहा हूं। आई एम रिपीटिंग इन both the languages properly, but some people are like no, I want only Hindi, some people are like no, I want only English. So next session onwards what I'll do is I'll take the same thing twice, two separate sessions, one for Hindi, one for English. That's cool. Today you please cooperate, because I'm repeating each and everything in both the languages. Try understanding. आज आप कॉपरेट कर ले, क्योंकि मैं हर चीज को दोनों लैंग्वेजेस में रिपीट कर रहा हूं। बाकी बाकी आगे से मैं ध्यान रखूंगा, मैं हिंदी हिंदी ब्रैकेट में लिख के पूरा अलग कर दूंगा, इंग्लिश अलग कर दूंगा। I'll do both the sessions separately. हिंदी सेशंस सेपरेट, इंग्लिश सेशंस सेपरेट। कूल। आप अगर ऐसा कुछ गिवन हो तो आप इस तरह से डिफरेंशिएट करने वाले हो, बट ये आपने नहीं करना है। बट ये है आम जिंदगी, ये है आम जिंदगी, और आम जिंदगी आप नहीं जीने वाले हो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो। इफ यू आर माई स्टूडेंट यू आर नॉट गोइंग टू लिव आम जिंदगी, you are rather going to take log of this. Log of this will become log of e power x plus log of sin 3x minus log of x square plus 1 power 1 upon 2. Now you know, आपने प्रोडक्ट और डिवीजन को सम और सब्ट्रैक्शन में चेंज कर दिया। The product of two functions and the division of two functions you have changed into the addition and subtraction of two functions. You have changed into the addition and subtraction of two functions. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो, and then it becomes very easy. X and ln e becomes 1, and then we have ln of sin 3x, 1 by 2 comes out and you have ln of x square plus 1. Ln e becomes 1, so I'm going to get ln y is equal to x. Ln e becomes 1 plus ln sin 3x minus 1 by 2 ln of x square plus 1. Now you can differentiate like a pro. ln y डेरिवेटिव will become 1 upon y, but y को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। x का डेरिवेटिव 1, ln sin 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 upon sin 3x, sin 3x को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, और sin 3x का डेरिवेटिव होगा cos 3x, 3x को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, माइनस ln x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, x स्क्वायर प्लस 1 you will have to differentiate again. Just take this y and multiply it into the right hand side and you get dy by dx. dy by dx आपको मिल जाएगा, आप सिर्फ ये y यहां से उठाकर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ के बाद से आप खुद इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। The idea that I have just presented is called logarithmic differentiation. जो आइडिया, जो कंसेप्ट, जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, इसे कहते हैं logarithmic differentiation. सर आप स्मार्ट टीवी पे पढ़ा रहे हैं और मैं स्मार्ट टीवी पे पढ़ रहा हूं। मूवी देखने से भी ज्यादा मजा आ रहा है, घर वाले शॉक्ड हैं। क्या ही तो बात है, जबरदस्त। द कैओटिक हाउस, मैं आपको टीसीएच कह दूं, टीसीएच जी, मेरी विशेष आपके साथ है। अगर आपकी तन्मयता और आपका लगन
इतना है कि आप टीवी को यूज कर रहे हो मूवी देखने के बजाय पढ़ने के लिए, आई एम प्रीटी श्योर दैट यू हैव लॉन्ग वे टू गो। आई एम प्रीटी श्योर दैट मचाने वाले हो आप। इसी लगन को बनाए रखना, और सिर्फ बनाए मत रखना, हर दिन 1% ही सही बढ़ाने की कोशिश करना, इस डिवोशन को, इस डेडिकेशन को और इस डिसिप्लिन को। चलो, तो ये जो आइडिया मैंने आपके सामने रखा है, इसे इस मेंटोस जिंदगी को कहते हैं। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल यूज करते तो काफी लेंदी सॉल्यूशन होता, काफी लेंदी सॉल्यूशन होता। लेकिन अगर आप ये फंडा यूज करने वाले हो तो ये एक आसान तरीका होगा। इस आइडिया को कहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दिस आइडिया इज नोन एज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। This idea we call as logarithmic differentiation. इस तरह से आप कैसा भी, कितने भी प्रोडक्ट और डिवीजन आ जाए, आप प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल यूज ही नहीं करने वाले हो। आप पहले लॉग ले लोगे और लॉग लेने के बाद खेला होगे। लॉग लेने के बाद जो प्रोडक्ट और डिवीजन हुआ करता था, वो प्रोडक्ट और डिवीजन आप जो प्रोडक्ट और डिवीजन हुआ करता था, वो प्रोडक्ट और डिवीजन अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बदल चुका है। That product and division have changed into addition and subtraction, my dear friends. So this is how you do the derivatives. Now I take you to the second thing of differential calculus. And the second thing of differential calculus is maxima, minima. डिफरेंशियल कैलकुलस के दूसरे पायदान पर खड़े हैं हम लोग। We are at the second topic of differential calculus, and that second topic is maxima minima. By the way, make sure that you make a list of all these standard formulas that we have learned today, and these standard formulas are: number one, please make a separate list and memorize all these standard formulas. Number one, the derivative of x power n, and number two, the derivative of e power x. This is first standard formula. And then derivative of e power x, second standard formula. Derivative of e power x, second standard formula. And then, my dear friends, we have derivative of sine x, third standard formula. Derivative of sine x, third standard formula. I'm just highlighting them so that जब मैं पीडीएफ भेजूंगा तो आपको पता होगा कि कौन से फॉर्मूलाज को मेमोराइज करना है। एंड चौथा स्टैंडर्ड फॉर्मूला cos x का डेरिवेटिव। द फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ cos x। एंड देन माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट रूल भी आपको याद रखना है। दिस प्रोडक्ट रूल यू विल हैव टू मेमोराइज। एंड प्रोडक्ट रूल के बाद हमने क्वोशिएंट रूल किया, वो भी आपको रटना है। यू विल हैव टू मेमोराइज दिस क्वोशिएंट रूल। उसके बाद हमने चार स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज फिर से एक बार किए। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है tan x का डेरिवेटिव, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है cot x का डेरिवेटिव, तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है sec x का डेरिवेटिव, और चौथा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है sec x का डेरिवेटिव, और चौथा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है cosec x का डेरिवेटिव। One standard formula is tan x का डेरिवेटिव, another standard formula is cot x का डेरिवेटिव, yet another standard formula is sec x का डेरिवेटिव, and yet another standard formula is cosec x का डेरिवेटिव। Then we learned about chain rule. उसके बाद we learned about chain rule. Okay? चेन रूल के बाद हमने चेन रूल की मदद से तीन और स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज डिराइव किए। वन स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज फॉर log x बेस e, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है log x बेस e के लिए, और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है a पावर x के लिए। देन देयर इज वन मोर स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर a पावर x, एंड देन देयर इज वन मोर स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर तो ये सारे आपको रटने हैं जितने मैंने हाईलाइट कर दिए हैं।
मैं पीडीएफ भेज देने वाला हूं, इस पूरे रिवीजन सेशन की पीडीएफ आई एम गोइंग टू सेंड, डोंट वरी। फिर ये दो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स तो बस माइनस साइन लगा देना इसमें एक न्यूमरेटर में, और tan x का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस x square. So I'm just highlighting everything that you need to memorize end of the day. जो भी चीजें आपको रटनी है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब मैं आपको ले चलता हूं एंड देन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, अब मैं आपको ले चलता हूं मैक्सिमा मिनिमा पर। नाउ आई टेक यू टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड मैक्सिमा मिनिमा। ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। एक परसेंट भी बन जाए तो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं जी टीसीएच जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझसे भी आगे जाने वाले हो, आप मुझसे भी लाइफ में बड़े बड़े अचीवमेंट्स करने वाले हो। अभी तो ये शुरुआत है सफर की, उड़ाने अभी और भी बाकी हैं। बस आप जो डिसीजन लो, मेक श्योर कि उस डिसीजन को गिव अप मत करना। निराशाएं आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हाईज एंड लोज आएंगे, गड्ढे मिलेंगे रास्ते में, ठोकरें लगेंगी रास्तों में, कांटे चुभेंगे, खून बहेगा, लेकिन रुकना मत। चरैवेति चरैवेति, कीप मूविंग कीप मूविंग। हमारे उपनिषदों में कहा गया है चरैवेति चरैवेति, नो मैटर व्हाट। एक बार आपने डेस्टिनेशन बना ली है तो फिर पीछे मुड़ के मत देखना। Once you have decided that GATE or engineering services exams or that startup or that company or that Google or that Microsoft or that whatever is my destination, then don't look back unless you reach there. कुछ भी हो जाए, ठोकरें लगे लगने दो, कांटे चुभे चुभने दो, no matter what, आपको रुकना नहीं है। हाँ, किसी को 2 दिन में अचीव होती हैं चीजें, किसी को 2 वीक में अचीव होती हैं, समय लग सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं कहा गया है कि देर है अंधेर नहीं। ये जो छोटे छोटे मुहावरे हैं, इनके पीछे एक डीप मीनिंग छिपा हुआ है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, कितना कैजुअली हम लोग कह देते हैं। सच्चाई ये है कि ये सिर्फ मुहावरा नहीं है, ये एक डीप फिलॉसफी है दैट कई बार आपको टाइम लग सकता है लेकिन आप पहुंचेंगे जरूर। ऐसे ही एक और मुहावरा की ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार आपकी परीक्षा हो रही होती है, हो रही होती है, हो रही होती है, हो रही होती है, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, और एक दिन जब आपकी मेहनत सफल होती है तो लोग कहते हैं अरे बाप रे, इसको क्या ही तो मिला है यार, क्या ही तो अचीव किया है इसने। क्योंकि दुनिया को यही दिखता है कि अरे छप्पर फाड़ के मिल गया इसको। लोगों को ये नहीं दिखता है कि यार इस इंसान ने बैकग्राउंड में कितनी मेहनत की है, एक्यूमुलेट किया है। तो जिस दिन भी मिलेगा आपको छप्पर फाड़ के मिलेगा, बिलीव मी। मैक्सिमा मिनिमा, वंडरफुल थिंग, practically having so many applications. So what is maxima minima? Before you understand maxima minima, we will have to understand something called stationary points. My dear friends, sometimes what might happen is that the function value will have tangent of the slope, slope of the tangent positive, slope of the tangent positive, slope of the tangent some negative value, slope of the tangent some negative value, but somewhere the slope of the tangent is 0. कहीं पर ऐसा होगा कि टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा, कहीं पर ऐसा होगा कि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। Somewhere the slope of the tangent will become 0. मैंने प्रूफ किया है कि slope of the tangent ही dy by dx है, dy by dx ही slope of the tangent है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो स्लोप चाहे टेंजेंट का स्लोप कह लो या dy by dx कह लो, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि टेंजेंट का स्लोप
टेंजेंट पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा. Somewhere it will so happen that slope of the tangent will become horizontal and slope of the tangent will become 0. Slope of the tangent becoming 0 means what? Dy by dx becoming 0. Similarly here, slope of the tangent is negative, slope of the tangent is positive, slope of the tangent is negative, slope of the tangent is positive, but at this point, tangent is becoming horizontal. If tangent is becoming horizontal, slope of the tangent is 0. That means dy by dx is 0. कहीं पर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, कहीं पर टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव हो सकता है, कहीं पर टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव हो सकता है, कहीं पर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव हो सकता है. बट मेरे प्यारे दोस्तों, किसी पॉइंट पर ऐसा भी हो सकता है कि टेंजेंट का स्लोप 0 हो. टेंजेंट का स्लोप 0 होने का मतलब डेरिवेटिव 0 हो जाना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 हो जाना. ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट. Such a point where dy by dx becomes 0, that point is known as stationary point. किसी x की वैल्यू x स्टार पर ऐसा हो रहा है, x की किसी स्पेशल वैल्यू x स्टार पर ऐसा हो रहा है. This is happening at some value of x which is x star. Cool? I hope you understand. But आप देख सकते हो कि मैं लिख देता हूं इस बात को. At a point where derivative becomes 0, we call it stationary point. ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट. Such a point is known by the name स्टेशनरी पॉइंट. कुछ बुक्स में इसे क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं और कहीं पर पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा भी कहते हैं. Sometimes we also call it critical point and sometimes we also call it point of extrema. Extrema क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही थी, 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 बढ़ रही थी. इसके बाद फंक्शन की वैल्यू इसके ऊपर नहीं गई. उसके बाद फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करने लगी, डिक्रीज करने लगी, डिक्रीज करने लगी. तो एक एक्सट्रीम वैल्यू है, वो एक मैक्सिमम वैल्यू है. सिमिलरली यहां पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी. यहां के बाद से फंक्शन और नीचे नहीं गया, यहां के बाद से फंक्शन वापस इंक्रीज करने लग गया. तो इस पॉइंट पर फंक्शन अपने मिनिमम वैल्यू पर आ गया. इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट सर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा. गलत. स्टेशनरी पॉइंट या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या दोनों में से हो सकता है कोई ना हो. ये स्टेशनरी पॉइंट पे फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, मैक्सिमा हो गया. ये स्टेशनरी पॉइंट पे फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू पर है, मिनिमा हो गया. तो या तो स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमा होगा या स्टेशनरी पॉइंट मिनिमा होगा. कुछ और कैसे हो सकता है? पेशेंस, धैर्य रखो, मैं आपको बताऊंगा. अभी के लिए याद रखना, स्टेशनरी पॉइंट कैन बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. स्टेशनरी पॉइंट है ये, लेकिन ये स्टेशनरी पॉइंट एट द सेम टाइम हम देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है. We can very clearly see that the function is at maximum value. ये भी एक स्टेशनरी पॉइंट है, x is equal to x star, लेकिन इस स्टेशनरी पॉइंट पर हम देख पा रहे हैं कि फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू पर है. सर कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमा बना और कौन सा स्टेशनरी पॉइंट मिनिमा बना? How would we know that which stationary point is going to become point of maxima, and how would we know that which stationary point is going to become point of minima? It's visible. इसमें पता क्या करना है? But not always the graph will be given to you.
then how would you know? From the graph only we are going to get the trick. ग्राफ से ही हम ट्रिक निकालने वाले हैं कि कब हम एक स्टेशनरी पॉइंट है हमारे पास, स्टेशनरी पॉइंट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाना, स्टेशनरी पॉइंट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाना, स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट का स्लोप जीरो हो जाए या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाए. Stationary point is that point at which first derivative becomes zero, or at which slope of the tangent becomes zero. By the way, these hd dot xyz whatever comments are there in the video, make sure that you never click on such clickbait messages. Otherwise, you yourself will be responsible for any hacking or something that happens in your phone. Okay? कोई हैकिंग होती है, कुछ भी होता है, तो वो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे. इस तरह के किसी भी स्पैम मैसेज पे क्लिक ना करें, उसको ऐसे इग्नोर करें जैसे वो पैदा ही नहीं हुआ. ऑलवेज इग्नोर इट जस्ट लाइक इट नेवर अपीयर्ड. है ना? इनको पता है कि आपकी उम्र, इनको पता है कि ये एजुकेशनल वीडियो है. एजुकेशनल वीडियो वो देख रहे होंगे जो कहीं ना कहीं 15 से, इंजीनियरिंग का एजुकेशनल वीडियो 15 से 25 के बीच में होंगे. इनको पता है कि इसी उम्र को टारगेट करना है मुझे इस तरह के कंटेंट के साथ. दे नो एंड दे डिलीट द मैसेज आफ्टर अ लिटिल बिट सो दैट दे कांट बी ब्लॉक्ड. इसलिए मेक श्योर दैट यू नेवर एवर क्लिक ऑन देम. एनीवेज तो ग्राफ तो हमेशा गिवन नहीं होगा. कैसे हम पता करें कि स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमा है या स्टेशनरी पॉइंट मिनिमा है? हाउ डू वी नो दैट? नोटिस दैट at this point, just before this point, the dy by dx was positive. At this point, dy by dx is 0. And just after this point, the dy by dx is becoming negative. I can conclude that at such a point, ये stationary point है, ये stationary point है, ये stationary point है, और इस पर dy by dx 0 हुआ है, slope of the tangent 0 हुआ है. लेकिन at the same time मैं ये भी नोटिस करता हूं कि उसके पहले dy by dx पॉजिटिव था और उस पॉइंट पर dy by dx 0 हुआ, और उस पॉइंट के बाद dy by dx नेगेटिव हो गया. dy by dx अपनी वैल्यूज को पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव की तरफ ले जा रहा है. इसका मतलब dy by dx डिक्रीज कर रहा है. इट मींस dy by dx इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली. अगर dy by dx डिक्रीज कर रहा है तो dy by dx का रेट ऑफ चेंज ऑब्वियसली नेगेटिव है. आज के बाद से याद रखना, एक ऐसा स्टेशनरी पॉइंट जिस पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ करेगा. Stationary point at which second derivative becomes negative, that will be point of maxima. Similarly here, once again, this point is stationary point. ये point x is equal to x star पे हमारे पास x is equal to x star पे हमारे पास first derivative 0 है. first derivative 0 है तो ये stationary point हुआ without any doubt. But ग्राफ से मुझे दिख रहा है कि ये स्टेशनरी पॉइंट एक पॉइंट ऑफ मिनिमा है. कैसे मैथमेटिकली कैसे मैं इस बात को समझूंगा? माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट बिफोर दैट पॉइंट इफ यू सी the dy by dx values are negative. Just after that point, if you see the dy by dx values are positive. So I can see that dy by dx values उस पॉइंट के आसपास पहले नेगेटिव थे, फिर 0 हुए और फिर पॉजिटिव हुए. नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव. अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव से 0 और फिर 0 से पॉजिटिव हो जाती है, जाहिर सी बात है वो क्वांटिटी बढ़ रही है,
वो क्वांटिटी बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि उस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है. I can very clearly say that if dy by dx is increasing, then the rate of change of dy by dx is positive. Today onwards, you should remember, if at a stationary point of maxima is also a stationary point of maxima is also a stationary point of minima is also a stationary point. How do you distinguish between these two kind of stationary points? In one case, at such a stationary point, which is a point of maxima, second derivative will be negative. And in another case, such a stationary point, which is a point of minima, second derivative will be positive. Second derivative will be positive. ध्यान से समझियो. So this is how you determine maxima and minima. But you notice that I said that sometimes it might so happen that it will neither be maxima nor be minima. Ladies and gentlemen, let me introduce you to a point called point of inflection. Let me introduce you to a point called point of inflection. You see, we have seen that whenever the curve is concave down, second derivative is negative, negative, negative. And whenever the curve is concave up, second derivative is positive, positive, positive. जब भी कर्व कॉन्केव डाउन है सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है. जब भी कर्व कॉन्केव अप है सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है. लेकिन कई बार ऐसा होगा मेरे प्यारे दोस्तों दैट सेकंड डेरिवेटिव कहीं पर तो पॉजिटिव होगा बट सेकंड डेरिवेटिव कहीं पर तो नेगेटिव होगा. कहीं पर आपको कर्व कॉन्केव अप दिखेगा. कर्व अगर कॉन्केव अप है तो उसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव होना. कर्व अगर कॉन्केव डाउन है तो उसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव का नेगेटिव होना. जाहिर सी बात है, अगर सेकंड डेरिवेटिव यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, ये बात तो हमें समझ में आ गई अब कि सेकंड कॉन्केव डाउन कर्व मतलब if there is a curve which is concave down, then second derivative will be negative. If there is a curve which is concave down, then second derivative is negative. And if a curve is concave up, then second derivative is positive. Then, my dear friends, we have second derivative value becoming positive. Now, we are going to see one special curve in which कहीं पर कर्व कॉन्केव अप है तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है. जहां पर कर्व कॉन्केव डाउन है सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है. मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव है सेकंड हाफ में नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव कोई भी कंटिन्यूअस क्वांटिटी बिना जीरो को क्रॉस किए नहीं जा सकती. एनी कंटिन्यूअस क्वांटिटी कैन नेवर go from positive into negative without crossing zero. And therefore we conclude that जहां पर कर्व ने अपनी concavity change की है, जिसके पहले तक वो concave अप हुआ करता था, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव था, जिसके बाद वो concave डाउन हो गया, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया. तो जहां पर ये ट्रांजिशन हुआ है, जाहिर सी बात है वहां सेकंड डेरिवेटिव जीरो होना पड़ेगा. Such a point where a curve changes its concavity and second derivative changes the sign from positive to negative becomes zero is known by the name point of inflection. Such a point where curve changes concavity and second derivative
becomes 0 while changing itself from positive to negative और vice versa। ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। अब आप याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था एक स्टेशनरी, ये ध्यान रखना, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। This inflection point is not a stationary point since d2y by dx2 is 0, but I can very clearly see that dy by dx is not 0. This is an inflection point but not a stationary point क्योंकि इसमें first derivative 0 नहीं है। Wait a moment. Hello? Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. ठीक है हम कर ही थे आपका थोड़ी देर में। I'm sorry for the disruption. There was an important call. मेरा एक बार सिलेबस हो चुका है, मुझे सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? आई सपोज यस, क्योंकि मैं रिपीटर्स के लिए कोर्सेस लॉन्च करने वाला हूं 13 जुलाई से 13 जुलाई, एंड आई एम गोइंग टू लॉन्च courses for repeaters in which only practice and test, practice and test, practice and test, practice and test will be there. So अगर आप अफोर्ड कर सकते हो प्लीज कंटिन्यू। तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट जरूर है बट स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। दिस इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट बट नॉट अ स्टेशनरी पॉइंट, बट sometimes there may be coincidence that an inflection point also happens to be a stationary point. My dear friends, sometimes you are going to have dy by dx becoming 0 and d2y by dx2, d2y by dx2 becoming negative. That will be a stationary point, yes. Wait a moment, I need to complete 4 things here. Sometimes there could be a stationary point at which first derivative is 0 and second derivative is negative. This is a stationary point, yes. And since second derivative is negative, this is a point of maxima. सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने के कारण ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। कूल, पहली पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी, दैट समटाइम्स वी हैव y dash becoming 0 but y double dash becoming positive. This is a stationary point, yes. This is a stationary point or not? Yes. But this stationary point is point of minima. Sometimes you might be having second derivative becoming 0. This is a point of inflection, yes. This is a point of inflection, yes. But is this a stationary point? No. ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, बिल्कुल है, लेकिन क्या ये स्टेशनरी पॉइंट है? ना, y डैश एग्जिस्ट कर रहा है। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इट इज, यस, बट स्टेशनरी पॉइंट है क्या? बट ये पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है क्या? नो 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 नो। बट एक चौथी पॉसिबिलिटी के बारे में समझ लो दोस्त।
that कई बार ऐसा हो सकता है, sometimes it might so happen that एक point of inflection पे tangent भी horizontal हो जाए. So y dash b0 है और y double dash b0 है. ये stationary point भी है और ये point of inflection भी है. This is an stationary point, yes, and this is a point of inflection, yes. This is a stationary point, yes, and this is the point of inflection, yes. So please do remember all these four possibilities. First possibility is point of maxima. Second possibility is point of minima. Third possibility is point of inflection, which is not a stationary point. And fourth possibility is point of inflection, which is also a stationary point. पहली possibility है point of maxima, second possibility है point of minima, third possibility है point of inflection जो कि stationary point नहीं है, चौथी possibility है point of inflection जो कि stationary point भी है. ठीक है, एक बहुत quick problem solve करेंगे. We will be solving one very quick problem. That let's say y is equal to 3x cube minus 12x square minus 6x plus 30. स्टेशनरी पॉइंट्स है क्या इसमें, एक्सप्लोर करें. और वो स्टेशनरी पॉइंट्स मिनिमा है या मैक्सिमा है या इन्फ्लेक्शन है या क्या है वो भी बताएं. Whether this curve, this function is having stationary points, explore it, and whether that stationary point is point of maxima or point of minima or point of inflection. Elaborate. So I'm going to first of all find out first derivative. First derivative will become 9x square minus 24x minus 6, and then I'm going to find out the second derivative. Second derivative will become 18x minus 24. Now for a stationary point I'm going to equate this. For a stationary point I'm going to equate this to 0. If I equate this to 0, I'm going to get some x values. Let me quickly find them out. Equation degree is 2. A value is 9, B value is minus 24, C value is minus 6. Hey guys, I'm getting one stationary point at 2.8968 and another stationary point as minus 0.23014. इन दोनों x values पर मुझे second derivative, तो stationary points दो मिल गए हमारे पास. There are two stationary points now. There are two stationary points. One stationary point is x is equal to 2.8968. Another stationary point is 0.23014. 0.23014. अब इनमें से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है उसके लिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव चेक करना होगा. 18x minus 24. So 18 multiplied by 2.8968 minus 24. सेकंड डेरिवेटिव इस वाले पॉइंट पर ध्यान से समझियो. 18 into 2.8968 minus 24 पॉजिटिव है. 28.1424. It's a positive value. सेकेंड डेरिवेटिव दूसरे स्टेशनरी पॉइंट पर नेगेटिव है. At the second stationary point, second derivative is very clearly negative. If I substitute minus 0.23014, it's a negative value. इसका मतलब पहला stationary point जहां second derivative positive है, point of minima हुआ. दूसरा stationary point जहां second derivative negative है, point of minima हुआ. So stationary point हमारे पास दो थे. Stationary points, we have two of them. Stationary point
x is equal to 2.8968। इस पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसलिए इस पर फंक्शन अपनी लोकल मिनिमम पर होगा और 0.23014 at this second derivative is negative, so function will be at its local maximum. Is there any third stationary point? No. But do we have an inflection point? Yes, we have an inflection point. Inflection point we have at where second derivative becomes 0. Second derivative is becoming 0 at 1.3333. So if you want to find out inflection point, simply equate second derivative to 0. अगर आपको inflection point find out करना है, inflection, so you are going to equate second derivative to 0. Second derivative was 18x minus 24. So I'm going to get x is equal to 1.333333. This becomes point of inflection. My dear friends, these things can always help you plot any difficult curve. At x is equal to 2.8968, we have a minima. At x is equal to minus 0.2304, we have a maxima. At x is equal to 2.8968, we have a minima. At x is equal to minus 0.23014, we have a maxima. At x is equal to 1.333333, we have point of inflection. जल्दी से इन तीनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 2.8968 पावर 3 multiplied by 3 minus 2.8968 into 2.8968 into 12 minus 6 into 2.8968 plus 30. This value is minus 15.15. This value of the function is minus 15.15. Minus 0.23014 पे फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। Minus 0.23014 cube into 3 and then minus minus plus 0.23014 into 0.23014 23014 into 12 and then minus minus plus again 6 into 0.23014 and plus 30. Guys, I'm getting 32. Minus 0.2304 पे फंक्शन की वैल्यू है 32. अब आप बड़े आराम से इस फंक्शन को विजुअलाइज कर सकते हो. Now you can visualize this function very easily. 1.33 पर क्या है वैल्यू? 1.333333 cube multiplied by 3 minus 1.3333 into 1.3333 into 12 minus 6 into 1.3333 plus 30. 7.77. 1.33 पे फंक्शन की वैल्यू है 7.77. 7.77. अब आप बड़े आराम से विजुअलाइज कर सकते हो how the function is going to look like. The function is having a maxima here and then this is the point where it all changes. This is the point where it all changes. Where it all changes into something else. What something else? Then it becomes like this. Cool. एक ही ग्राफ में मैंने मैक्सिमा, मिनिमा और इन्फ्लेक्शन तीनों बता दिए. In one function I have explained maxima, I have explained minima and I have explained inflection. Sometimes you'll get the problems based on language. कई बार वो language पे based problems देंगे आपको. जैसे एक कोन का slanted height अगर फिक्स कर दिया जाए, जैसे कोन का स्लैंटेड हाइट फिक्स कर दिया जाए तो उसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए R और H का रेशियो क्या होना चाहिए?
जैसे आपको कह दिया जाए कि एक कोन का स्लैंटेड हाइट अगर फिक्स हो तो उस कोन के H और R में क्या रिलेशन होनी चाहिए so that volume becomes maximum. इसको आप पहले अपनी मैथमेटिक्स में चेंज करोगे. First of all, if it is given that there is a cone of fixed slanted height, then what should be the relation between R and H so that you get the maximum volume. For a fixed slanted length of the cone, maximum volume will be obtained for what relation of R and H? So first of all, you are going to change it into the language of mathematics, that I need to maximize volume of this cone 1 by 3 pi R square H, subjected to the condition that R square plus H square is equal to L square is equal to a constant. I need to maximize volume 1 by 3 pi R square H, subjected to the condition that R square plus H square is equal to L square is a constant. Okay? Now, do you know how to maximize the functions of two variables? No. Change that function of two variable into a function of one variable using this condition. ये condition use करके आप उस दो variable के function को एक variable में change करो please. So इस condition को use करके बड़े आराम से हम अपने function को R square को replace कर सकते L square minus H square multiplied by H. L constant है, ये याद रखना. अब आपके पास पूरा का पूरा फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल में है 1 by 3 pi and L square x minus x cube, where y का मतलब वॉल्यूम और x का मतलब हाइट, where y means volume and x means height. Y means volume and x means height. इसके बाद आप कर लोगे. After this, you can do it yourself. I now take you to the third topic of differential calculus. And the third topic of differential calculus is limits and continuity. Differential calculus का तीसरा टॉपिक है limits and continuity. क्या ही तो बात है. धीरे हम कैलकुलस को कितने बखूबी और कितने सिस्टमैटिक तरीके से एक टॉपिक को एक कंसेप्ट को कितने आराम से एब्जॉर्ब कर रहे हैं एक कंसेप्चुअल लर्निंग के थ्रू. Gradually, systematically, we are absorbing every single concept in such a beautiful and such a systematic manner. Limits and continuity. Limit is what? Well, sometimes in real practical life, it happens that a function value is not defined at a particular point. And then we say that we don't have a choice but to find out the function value little before that point or little after that point. Little before that point, a little after that point. Okay? And maybe because the function is not defined there, so maybe we will just compromise with its neighboring values. Try understanding. Let me take an example. Let's say, my dear friends, I define y is equal to fx is equal to fx is equal to 1 minus cos x upon x. Y is equal to function of x is equal to 1 minus cos x upon x. And I want to find out the value of this function at x is equal to 0. At x is equal to 0. So I put x is equal to 0 in numerator and I get cos 0. Cos 0 becomes 1
So I get 0 upon 0. Now the problem is that 0 divided by something, 0 divided by something is always 0. And something divided by 0 is always infinity. 0 divided by something हो तो हम 0 लिखते हैं, और something divided by 0 हो तो हम infinity लिखते हैं. तो इस 0 by 0 को हम 0 divided by something की तरफ ट्रीट करने वाले हैं, या फिर इस 0 by 0 को हम something divided by 0 की तरह ट्रीट करने वाले हैं. Are we going to treat that 0 divided by 0 as 0 divided by something, or are we going to treat that 0 divided by 0 as something divided by 0? Now this is where mathematics fails. This is where mathematics fails. 0 by 0 अगर इस तरह से देखें तो 0 भी लिखा जा सकता है, और अगर इस तरह से देखें तो इंफिनिटी भी लिखा जा सकता है. इसे कहते हैं इंडिटरमिनेट हो जाना. This is what you call इंडिटरमिनेट हो जाना. बट सर कोई तो तरीका होगा ना इस वैल्यू को जानने का. Now this is where you need to surrender. यहां पर आपको समर्पण करने की जरूरत है. यहां पर आप पूरी मैथमेटिक्स दुनिया की और पूरी साइंस हाथ खड़े कर देती है, नहीं बता सकते. नहीं मतलब सर, मतलब साइंस काफी आगे बढ़ गई है, कंप्यूटर्स एंड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सर मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं हम लोग. सर मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं हम लोग. अंतरिक्ष की माइनिंग कर रहे हैं हम लोग, अंतरिक्ष का खनन कर रहे हैं, देख रहे हैं कहां क्या है. हाँ बैठ जाओ भी. स्टिल आप मंगल नहीं शुक्र पर पहुंच गए हो, लेकिन आप इस बात के साथ शुक्र नहीं मना सकते 0 by 0 हमें नहीं पता क्या है. नहीं मतलब हमें नहीं पता ना, लेकिन साइंटिस्ट को पता होगा, उनको भी नहीं पता क्या है. अब तुम बैठ जाओ. नाउ यू सिट डाउन प्लीज. Nobody knows. Doesn't matter whether we have reached Mars or Pluto or Venus or Mercury or whatever. Doesn't matter that we are excelling in artificial intelligence. We just don't know what is 0 by 0. 0 by 0 could be 0. 0 by 0 could be infinity. God knows what it is. It becomes indeterminate. And therefore, we notice that at x is equal to 0, that function is not defined. At x is equal to 0, that function is not defined. Not at all defined. That function is not at all defined. So we are going to say that, listen, I can find out that value at x is equal to minus 0.000001. I can find out that value at 0.0001. I can find out the function value at 0.0001. Okay? And these values, since the function value is not known at x is equal to 0, I'll find out in the neighborhood points. And then I'm going to say that these limiting values can be used to know the information of the function at that point. क्योंकि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए मैं उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, और मैं कहूंगा कि इन लिमिटिंग वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की जानकारी हासिल करने के लिए. These limiting values can be used to extract the information of the function at that particular point. If you find out just before x is equal to 0, that is called left hand limit. If you find out just after x is equal to 0, that is called right hand limit. अब इसमें एक समस्या कई बार और आएगी. वो समस्या क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं. यही फंक्शन लेते हैं और इसी फंक्शन के साथ जानने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई. y is equal to 1
minus cos x upon x at x is equal to 0. फंक्शन आ गया 0/0, not defined, not at all defined. तो हमने कहा x is equal to minus 0.0001 पर देख लो फंक्शन की वैल्यू, और x is equal to plus 0.0001 पर देख लो फंक्शन की वैल्यू। ओके, अपने कैलकुलेटर में मोड सेट करना रेडियन और फाइंड आउट करना cos of minus 0.0001 and then 1 minus answer upon minus 0.0001, and the value is minus 0.12345 and something like this. इतनी आती है वैल्यू। एक बार फिर से कर ले। Shall we do it once again? जरूरत नहीं है वैसे, वैल्यू ठीक है। अब इसको आप, इस वैल्यू को आप रफली अप्रोक्सीमेटली 0 ही तो कहने वाले हो यार। 0.0000, I mean come on, see 0.0000 0 ही है। ऐसे ही cos 0.0001 and then 1 minus answer upon 0.0001, ये आता है 0.000005। इसको भी आप 0 ही तो कहने वाले हो। तो आप बोलने वाले हो यार कि ये फंक्शन y की वैल्यू x is equal to 0 पर तो इंडिटरमिनेट थी, लेकिन मुझे लिमिटिंग वैल्यूज मिल गई हैं। लिमिटिंग वैल्यूज दोनों, लिमिटिंग वैल्यूज एट x is equal to little less than 0 and x is equal to little more than 0। फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 0 ही है। But sometimes we have another problem. इसकी आप लिमिटिंग वैल्यूज कैलकुलेट करो at x is equal to 10। तो at x is equal to 10 मतलब 10 से थोड़ा कम और फिर 10 से थोड़ा ज्यादा। 10 से little less than 10 and little more than 10। 9.9999 minus 10 and 1 upon answer minus 10,000 and 10.001 minus 10 and 1 upon answer plus 10,000। भाई साहब 10 पर फंक्शन डिफाइंड है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 10 के जस्ट पहले वैल्यू लगभग माइनस इंफिनिटी है और 10 के जस्ट बाद वैल्यू लगभग प्लस इंफिनिटी है। अगर जस्ट पहले और जस्ट बाद कैलकुलेट करोगे तो आपका जुगाड़ फेल हो गया। x इज इक्वल टू 10 पर तो भूल जाओ। 10 के जस्ट पहले अगर आप देखोगे फंक्शन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी, 10 के जस्ट बाद अगर आप देखोगे फंक्शन की वैल्यू प्लस इंफिनिटी। एट x इज इक्वल टू 10 आई डोंट केयर, बट 10 के जस्ट पहले अगर मैं देखूं, 10 के जस्ट पहले अगर मैं देखूं फंक्शन माइनस इंफिनिटी है, और 10 के जस्ट बाद अगर मैं देखूं फंक्शन प्लस इंफिनिटी है। If I see just before 10, the function is minus infinity. If I see just after 10, the function is plus infinity. Wait a moment. It's going to be like this and like this. तो दोस्त, अगर आप जस्ट पहले कैलकुलेट किए कहीं और ही है वैल्यू, जस्ट बाद कहीं और ही है, हम कहते हैं कि अब हमारा जो जुगाड़ था कि चलो भाई फंक्शन की वैल्यू नहीं डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू नहीं डिफाइंड है, तो कम से कम लिमिटिंग वैल्यू से ही काम चल जाएगा। अब उस लिमिटिंग वैल्यू से भी काम नहीं चलने वाला। टेक्निकल लैंग्वेज में लोगों ने कहना शुरू किया, लिमिट डजंट एग्जिस्ट।
कहानी क्या है? दैट फंक्शन वैल्यू कहीं नहीं डिफाइंड थी, तो उस फंक्शन वैल्यू की जानकारी हासिल करने के लिए हमने लिमिटिंग वैल्यूज पर रिलाई करना शुरू किया, लिमिटिंग वैल्यूज पर निर्भर होना शुरू किया। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिनमें लिमिटिंग वैल्यूज भी धोखा देने वाली हैं आपको, क्योंकि जब आप जस्ट पहले कैलकुलेट करोगे तो कुछ और मिलेगा, जस्ट बाद कैलकुलेट करोगे तो कुछ और मिलेगा। लोगों ने टेक्निकली इसको कहना शुरू कर दिया कि जब ऐसा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि आप भैया उस वैल्यू पर फंक्शन ना तो डिफाइंड है ना लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ऑल राइट, वी से लिमिट डजंट एग्जिस्ट, we say limit doesn't exist. Left hand limit is not equal to right hand limit. We say limit does not exist. What we know in the background that now even the jugaad of limit is not working. I repeat once again that the whole idea is that sometimes a function is not defined at a point, then we rely on limiting values to know the information of the function. But then there are some functions that refuse to give us one definite value even in the limits. Now, if they ask that whether limit exists or not, then don't try to solve. Just try to put the values like this and you'll always get that limit exists or not. अगर वो किसी न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लें कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो सॉल्व वॉल्व मत करना, ऐसे वैल्यूज रख के जैसे मैंने दिखाया है ना, ऐसे कर लेना। कूल। अब 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, लिमिट्स के केस में ये दो इंडिटरमिनेट फॉर्म आपके सामने जब भी आए तो आपको क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ध्यान से समझिए। 0/0 means what? 0/0 means that a function x and a function g, a function f and a function g, both are becoming 0 when you put x is equal to a. When you put x is equal to a, both are becoming 0. When you put x is equal to a, fx is also becoming 0, and when you put x is equal to a, then gx is also becoming 0. Okay, so I can very clearly subtract 0 in numerator and 0 in denominator. And mathematics permits me that, hey, you can always divide by the same thing in numerator and divide by the same thing in denominator. Divide by the same thing in numerator and divide by the same thing in denominator. But 0 is the value of fa. But 0 is the value of fa. And also 0 is the value of GA. You would notice that if x is very close to a, then whole numerator is representing the derivative of f with respect to x. And if x is very close to a, then little change in g upon little change in x. If x is very close to a, then x minus a is obviously little change in x. And if x is very close to a, then f of x minus f of a is representing little change in f. And if x is very close to a, then g of x minus g of a is representing little change in g. So I can now write this whole thing as limit x tending to a,
that becomes delta f upon delta x, and this becomes delta g upon delta x. My dear friends, this is nothing but the derivative of, this is nothing but the derivative of function f, and this is nothing but the derivative of function g. इस रूल को कहते हैं एल हॉपिटल रूल. दिस रूल इज नोन बाय द नेम एल हॉपिटल रूल. प्रूफ एक्सक्लूसिवली आप मेरी क्लासेस में देखेंगे. 6 months का परचेज सही रहेगा, मोर देन इनफ. 6 months का परचेज कर लो, मोर देन इनफ रहेगा बेटा, नो प्रॉब्लम. इस रूल को जो अभी अभी आपने सीखा है, इस रूल को कहते हैं एल हॉपिटल रूल. आज के पहले आपने एल हॉपिटल रूल पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन एल हॉपिटल रूल को पैदा होते हुए आज पहली बार आपने देखा है. Whether you studied L Hospital rules so far or not, I don't know. But today onwards, you have seen L Hospital rule arising in front of you, getting derived in front of you for the first time. That अगर कभी भी कोई लिमिट 0/0 या infinity के फॉर्मेट में आ जाए, तो आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो अलग, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो अलग, और उसके बाद लिमिट यूज कर लो, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दो. आफ्टर दैट यू अप्लाई द लिमिट्स. ओके, बहुत क्लियरली आप देख सकते हो, दो लाइन में, एक लाइन में पूरा प्रूफ है. दैट पहले मैंने 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, फिर मैंने x माइनस a से डिवाइड कर दिया. अब 0 क्या है? फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू a पर, तभी तो ये 0/0 का फॉर्मेट बना होगा. अगर फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू a रखने पर 0 हो जाती है, और फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू a रखने पर 0 हो जाती है, तभी तो ये 0/0 का फॉर्मेट बना होगा. Then only it must have become the format of 0/0. Now my dear friends, any problem of this type, and you are going to solve like a pro. For example, sin x upon x. For example, e power x minus 1 upon x. For example, 1 minus cos mx upon x square. 1 minus cos mx upon x square. Okay, now listen and try understanding. अगर मैं सीधे sin 0 और 0 रख दूं, तो ये 0/0 का फॉर्मेट आ जाएगा. अगर मैं सीधे e पावर 0 रख दूं, तो e पावर 0 हो जाएगा 1, and 1 minus 1 becomes 0. अगर मैं सीधे x को 0 रख दूं, so 1 minus cos 0 and 0 square, cos 0 becomes 1, it becomes 0/0. ऐसा जब भी हो जाए, डिफरेंशिएट करो और एल हॉपिटल लगाओ. Differentiate and apply L Hospital. That this limit is going to become limit x tending to 0, derivative of cos x upon 1. And now you put cos 0 is equal to 1. That is the answer. That is the answer. Once again, e power x derivative is e power x, and x derivative is 1. So I get e power 0, that becomes 1. Once again, differentiate numerator separately, differentiate denominator separately. M sin mx and 2x. If I put x is equal to 0 again, it becomes 0/0 again. If it becomes 0/0 again, you differentiate again. So it becomes m square cos mx, and it becomes 2 into 1. It becomes, now you put cos 0 is equal to 1. Answer is m square upon 2. Okay?
Whenever it is going to be 0 by 0 or infinity by infinity format, simply differentiate numerator separately, simply differentiate denominator separately, and you are good to go. Second format is going to be 1 power infinity. Second type of indeterminate format is going to be 1 power infinity, is going to be infinity power 0, and is going to be 0 power 0. These three formats are indeterminate. Understanding why infinity power 0 or 0 power 0 is indeterminate is an easy job. Why 0 power 0 is indeterminate? Why 0 power 0 is indeterminate? 0 power 0 indeterminate क्यों है? क्योंकि 0 power something होता है 0 और something power 0 होता है 1. अब 0 power 0 को अगर मैं 0 power something की तरह देखूं तो 0 होना चाहिए, और 0 power 0 को अगर मैं something power 0 की तरह देखूं तो 1 होना चाहिए. If I see 0 power something as 0 power 0 as something power 0, पावर वाले 0 को 0 देखूं और बेस को something की तरह देखूं. If I see the base like something and power 0 as 0 only, then 0 power 0 according to this definition must be equal to 1. There is total blank. We don't know which one we are going to adopt. Whole science, technology, mathematics fails. पूरी साइंस, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी मैथमेटिक्स फेल हो जाती है. इंफिनिटी पावर 0 के साथ भी यही फंडा है. इंफिनिटी पावर 0 क्यों इंडिटरमिनेट है? क्योंकि इंफिनिटी पावर समथिंग होता है तो हम इंफिनिटी लिखते हैं, और समथिंग पावर 0 होता है, समथिंग पावर 0 होता है तो हम 1 लिखते हैं. अब इंफिनिटी पावर 0 को अगर हम इंफिनिटी पावर समथिंग की तरह ट्रीट करें तो ये इंफिनिटी होगा, और इंफिनिटी पावर 0 को हम समथिंग पावर 0 की तरह ट्रीट करें तो ये 1 होगा. टोटल कंफ्यूजन, टोटल कंट्रोवर्सी. पीपल सेड वी सरेंडर, बट ये दोनों इजीली समझ में आएंगे आपको. 1 पावर इंफिनिटी क्यों इंडिटरमिनेट है? Why 0 power 0 is indeterminate? We understood it quite simply. Why infinity power 0 is indeterminate? We understood it quite simply. Why 1 power infinity is indeterminate? This is a little mystery. क्योंकि 1 को तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 होना चाहिए. ये तो डेफिनेट है. This is definite. My dear friends, 1 power infinity को हम लिख सकते हैं 1 plus something very small power infinity, and something very small को हम लिख सकते हैं 1 upon something very large. नहीं लिख सकते हैं बिल्कुल. तो 1 power infinity को एक डेफिनेशन दी जा सकती है 1 plus 1 upon x power x when x is very large. But 1 power infinity को एक और डेफिनेशन दी जा सकती है. 1 power infinity को हम लिख सकते हैं 1 plus something very small power infinity. But something very small को अगर हम infinity square लिख दें, something very small is 1 upon infinity square, तब भी चलेगा. तो 1 power infinity को एक और डेफिनेशन दी जा सकती है 1 plus 1 upon x square power x. My dear friends, let's go ahead and try finding out these two limits. And ये हम फिनिश करेंगे स्टाइल में.
इन दो लिमिट्स को फाइंड आउट करके हमें पता चलेगा 1 पावर इंफिनिटी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है. Why the hell 1 power infinity is an indeterminate form? Before we go ahead and find out these two limits, I would like to tell you that जब भी 1 power infinity या infinity power 0 या 0 power 0 बन जाए तो आप एल हॉपिटल कैसे अप्लाई करने वाले हो, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. एंड बाय द वे, जो लोग प्लस या आइकॉनिक पर नहीं है, आ जाओ दोस्त, मचाएंगे साथ में, मिलकर मचाएंगे. वी आर गोइंग टू रॉक एंड वी आर गोइंग टू रॉक टुगेदर. गेट 2023 या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स 2023, मैं आपके साथ खड़ा रहने वाला हूं लास्ट दिन तक, और हम मिलकर ऐसे और इतने प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं कि एग्जाम में हमारे प्रॉब्लम्स के बाहर और कुछ नहीं होगा. 2020 या 2021 हो, मैंने कभी पीवाईक्यूज बेस्ड स्टडी नहीं करवाई, और लोगों ने बहुत सारा प्रोपेगेंडा बनाया कि मैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स करवाता हूं क्लास में. और मेरे डीपीपीज पहली बार अगर कोई पढ़ रहा है तो उससे 40-50% से ज्यादा सॉल्व नहीं होते. अगेन लोगों ने बहुत प्रोपेगेंडा बनाया, लेकिन 2022 में जिस तरह का पेपर आया उसने लोगों की आंखें खोल दी, उसने लोगों को रियलाइज करवा दिया कि पढ़ना है तो कंसेप्चुअल लर्निंग करनी होगी, पढ़ना है तो कंसेप्ट की डेप्थ में जाना होगा. फॉर्मूला रट के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला रट के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, ऐसा प्रॉब्लम आया है, ऐसा प्रॉब्लम आया है, ऐसा प्रॉब्लम आया है, इन 3 तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, हो गया. नहीं चलेगा वो, नहीं चलेगा वो. पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी नहीं चलेगी. कंसेप्चुअल लर्निंग विल नाउ बी द मोड ऑफ लर्निंग. So if you believe in conceptual learning, come together and we are going to make it an unmatchable journey together. Subscribe for Unacademy Plus or subscribe for Unacademy Iconic, and make sure subscribe for Unacademy Plus or subscribe for Unacademy Iconic using the codes MTLIVE. The good news is that you have a 20% discount today and tomorrow. आज और कल आपको मिल रहा है 20% डिस्काउंट. तो जो सब्सक्रिप्शन आपको 40,000 में पड़ता, वो लगभग 39,000 का एक साल का सब्सक्रिप्शन, वो आपको 31,000 में मिलने वाला है. The subscription that must have costed you 39,000, that's going to be available at 31,000, my dear friends. Cool? So make sure that you subscribe. Also note down this number. इस नंबर पे आप कॉल करके ईएमआई वगैरह के बारे में पता कर सकते हो कि 0% ईएमआई पे कैसे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. कूल, चलो जी. ये तो एंड हो गया, इतना सारा लिख डाला मैंने, बाप रे. जस्ट वेट अ मोमेंट गाइस, लिमिट्स खत्म करके हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड देन वी विल वेट अ मोमेंट. एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13. काफी है इतने. So whenever you come across this 1 power infinity thing or like that, तो बड़े आराम से आप ऐसे फॉलो करने वाले हो, ध्यान से समझिए. मान लेता हूं मैं एक लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, and 1 minus x power tan x.
अगर आप x को सीधे पाई बाई 2 रख दो, 1 माइनस cos पाई बाई 2 एंड देन tan पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 होता है 0 और tan पाई बाई 2 होता है इंफिनिटी। ये बन गया 1 पावर इंफिनिटी फॉर्मेट। जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले आप लॉग लेंगे। फंक्शन है आपके पास ऐसा कुछ, आप लॉग लेने वाले हो ln y, तो tan x बाहर आ जाएगा एंड आपके पास होगा ln 1 माइनस cos x। इज दैट क्लियर? अब आप tan x को नीचे लिख दो जरा, तो आपको मिल जाएगा ln y इज इक्वल टू ln 1 माइनस cos x अपॉन cot x। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो x टेंडिंग टू पाई बाई 2। जो भी लिमिट रिक्वायर्ड है वो लिमिट अप्लाई कर दो x टेंडिंग टू पाई बाई 2 ln y पे। So if you apply this limit x tending to pi by 2 log of 1 minus cos x upon cot x। अब आप जरा रखकर देखो, आपको पता चलेगा कि ओहो 1 पावर इंफिनिटी बदल चुका है 0 बाई 0 में, क्योंकि cos पाई बाई 2 होता है 0 तो न्यूमरेटर में होगा ln 1 और cot 90 होता है 0, ln 1 होता है 0। ये 0 बाई 0 फॉर्मेट में चेंज हो गया। याद रखना, चाहे 1 पावर इंफिनिटी हो या इंफिनिटी पावर 0 हो या 0 पावर 0 हो, ये तीन फॉर्मेट जब भी होंगे तो आप लॉग लेकर 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। अब आप बड़े आराम से इसको डिफरेंशिएट करके चीजें सॉल्व कर सकते हो। नाउ यू डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस cos x। 1 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा sin x एंड cot x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस cosec square x। The derivative of cot x will become minus cosec square x. My dear friends, cosec square x को अगर मैं ऊपर ले जाऊं मुझे मिलेगा माइनस sin cube x अपॉन 1 माइनस cos x। sin पाई बाई 2 होता है 1 और cos पाई बाई 2 होता है 0। ये मिल गया है मुझे माइनस 1। This value is minus 1। ध्यान से समझियो। ln 1 minus cos x upon cot x, that's perfect, and then ln 1 upon 0, 0 upon 0, and then 1 minus, okay, perfect, fine, not a problem। अब दोस्त आपके पास ये लिमिट आ चुकी है लेकिन ये आंसर नहीं है। This limit is there but this limit is not the answer, क्योंकि ये तो ln y की वैल्यू है, क्योंकि ये तो ln y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू होगी e पावर माइनस 1। आंसर इज 1 अपॉन e। यही फंडा फॉलो करके अगर आप ये दोनों लिमिट्स फाइंड आउट करोगे, ये लिमिट होगी e और ये लिमिट जहां तक मुझे याद है 1 plus 1 upon x square, wait a moment, that will become x and ln 1 plus 1 upon x square, so ln 1 plus 1 upon x square will become 0 and x power minus 2 will become 2 upon x cube, and then x का derivative is 1 upon x का derivative is minus 1 upon x square। Yes, yes, so x cube and x square gets cancelled, I get minus 2 upon x plus 1 upon x। Okay, the thing is आप करके देखना एक बार,
और ये आपको E नहीं मिलेगा। और ये लॉजिक है 1 पावर इंफिनिटी के इनडिटरमिनेट होने का। ये वाला अगर आप वैसे ही जैसा फंडा मैंने यहां पर बताया है, just the way I explained it here, if you do it this one, then you will get E, but second one you are not going to get E. क्लास में मैंने करवाया है ये दोनों, और मैंने आपको बताया है 1 पावर इंफिनिटी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है. Why the hell 1 power infinity is an indeterminate form? Okay, that I have got done in the class. So, and the class PDF I'm going to send, don't worry. So whenever 1 power infinity is there, infinity power 0 is there, 0 power 0 is there, make sure that you take log. After taking log, it will always convert into 0 upon 0 format. लॉग लेने के बाद 0 upon 0 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा. कूल. एंड एक और फॉर्मेट आपके सामने आ सकता है. sometimes you might come across one more indeterminate format, that is infinity minus infinity. infinity minus infinity हो तो आपको रैशनलाइज करना होगा, फैक्टर्स करने होंगे, so that आप इसको infinity upon infinity या 0 upon 0 में चेंज कर सको. So that you can change it into 0 upon 0 or infinity upon infinity. Okay, so whenever infinity minus infinity is there, then you rationalize to change it into infinity upon infinity or 0 upon 0. Just one more indeterminate format, and that indeterminate format is infinity into 0. Infinity into 0 can always be written as, infinity can be written as something upon 0. So it will take the form of, easily it will take the form of 0 upon 0. Easily it will take the form of 0 upon 0. Example, limit x tending to pi by 2, tan x multiplied by sin x. Sorry, tan x multiplied by cos x. अब tan x multiplied by cos x को आप लिख सकते हो cos x multiplied by cot x divided by cot x. As of now, it was infinity into 0 format. Now it has become 0 upon 0 format. And once it becomes 0 upon 0 format, apply L'Hopital directly. So summarizing these things, that अगर 0 by 0 आ जाए या infinity by infinity आ जाए, apply L'Hopital directly. L'Hopital directly apply कर देना बेटे. Apply L'Hopital directly. Apply L'Hopital directly. अगर 0 power, sorry, 1 power infinity आ जाए, 0 power 0 आ जाए या infinity power 0 आ जाए, take log, क्योंकि आप जानते हो ln 1 power infinity बन जाता है like this, and then you can write it like this. ln 1 becomes 0 and 1 upon infinity becomes 0. Take log to change. Take log to change into 0 by 0 or infinity by infinity form. Indeterminate form infinity minus infinity आ जाए तो rationalize करना to change into
0 by 0 or infinity by infinity. और लास्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 into infinity आ जाए तो infinity को रख देना something upon 0. जैसे tan x है तो उसको cot x में चेंज कर देना. If tan x is there, change it into cot x. Just try to take that function into the denominator. And then it will become 0 upon 0 into something. Once it becomes 0 upon 0, then you can apply L'Hopital. These 7 indeterminate forms and everything is L'Hopital, 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 L'Hopital. Keep in mind that infinity plus infinity or minus infinity or infinity into infinity or 0 power plus infinity or 0 power minus infinity, they are not indeterminate forms. Since a very large value plus a very large value will be a very large value, a very large negative value and a very large negative value added together will be a very large negative value. A very large value into a very large value will also be a very large value. 0 power anything is going to become 0 power very large value is 0 only, and 0 power very large negative value, 0 power very large negative value is going to be 0 power infinity is approximated as plus infinity and 0 power minus infinity is approximated as minus infinity. सर ऐसे ही infinity minus infinity भी तो 0 है, उसको indeterminate क्यों कह रहे हैं? Infinity minus infinity, why are we calling as indeterminate? Infinity minus infinity seems like a 0 value. Why the hell are we calling it indeterminate? One infinity minus another infinity. One infinity minus another infinity. Take one example. 20 crores minus 19 crores. 20 crores minus 19 crores, 90 lakhs, 90,999. 20 crores, a big value, and 19 crores, 99 lakhs, 99,999. The difference is only 1. And now take another example. 200 crores minus 20 crores. The difference is 80 crores. If one infinity is very big infinity and another infinity is okay infinity, then the difference could be very large. And if one infinity is infinity and another infinity is also an infinity close to that infinity, then the difference could be very small. And that's why it's indeterminate. अगर एक infinity बहुत बड़ा वाला infinity है और दूसरा infinity उसके close वाला infinity है, तो डिफरेंस काफी कम हो जाएगा. अगर एक इंफिनिटी बहुत बड़ा वाला इंफिनिटी है और दूसरा इंफिनिटी उतना बड़ा वाला इंफिनिटी नहीं है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा. अगर 100 करोड़ से 20 करोड़ माइनस करोगे 80 करोड़ मिलेगा फिर से इंफिनिटी. और अगर 20 करोड़ से 19 करोड़ 99 लाख 99,999 माइनस करोगे 1 मिलेगा. एंड इसलिए इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. इट डजंट हैव अ फिक्स वैल्यू. सर ये भी तो फिक्स वैल्यू नहीं है. एटलीस्ट यू नो दैट large plus large will always become large. So you have an idea at least. It's not indeterminate. These forms are not indeterminate. What do you say, guys?
सर आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते हो क्या? नहीं बेटा, सिविल के सिर्फ सोम, एफएम और मैथ्स और मैकेनिक्स। अरे बाप रे, वेरी ब्रिलियंट टीचर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। 15 से 20 मिनट के बाद मिलेंगे और फिर से एक सेशन निकालेंगे हम लोग, जिस सेशन में हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यूटी और पार्शियल डेरिवेटिव और उसके एप्लीकेशंस। रुझानों को देखते हुए एक बात तो बहुत क्लियर हो चुकी है कि एक सेशन हमें और चाहिए होगा कैलकुलस के कंप्लीट समापन के लिए। बट आज हम 2 चैप्टर फिनिश करेंगे एट एनी रेट। वन डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव्स और उसके एप्लीकेशंस। So see you guys after 15 to 20 minutes, and then we will be doing partial derivatives and its applications along with continuity and mean value theorems and differentiability. And looking at the way things, actually I'm not one of that kind who can, just remain at the surface and finish up the things. When I cover something, I cover in, very systematic and detailed manner. So it takes time, but not a problem. I'll come up with a second part and I'll complete integral calculus and vector calculus as well. But today we will do partial derivatives and maxima minima of function of two variables, and also continuity and differentiability, and also mean value theorems in the remaining session. See you guys after 20 minutes. 20 मिनट के बाद मिलेंगे फिर से एक बार. 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. The session resumes at see you again at 5 PM. मिलते हैं सर. बाय. Hello people. Welcome back. Welcome back. तो हम लोग लिमिट्स के बारे में समझ चुके हैं. अब बारी है कि हम कंटिन्यूटी के बारे में समझें. We already understood about limits, left hand limit, right hand limit. In fact, you are always going to get a question where they will ask you limit extending to a, something into something, something upon something, something power something. And if it is 0 by 0, use L'Hopital directly. If it is infinity by infinity, use L'Hopital directly. If it is 1 power infinity or infinity power 0 or 0 power 0, then take log. After taking log, it will convert to 0 by 0 format. If it is infinity minus infinity, then you rationalize it and try to change it to 0 by 0 or infinity by infinity format. And if it is last thing 0 into infinity, then try to write infinity in a format of something upon 0. Like if there is tan x, write it 1 upon cot x. सारा L'Hopital से होगा. Whole limit is going to complete in L'Hopital, 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 L'Hopital. 0 by 0 है तब तो L'Hopital लगाओगे ही. अगर 0 by 0 नहीं है तो 0 by 0 बनाओगे फिर L'Hopital लगेगा. अगर 0 by 0 नहीं है तो 0 by 0 बनेगा और फिर L'Hopital लगेगा. The next thing that we are going to cover in this topic is
इस समय हम हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के तीसरे टॉपिक पर, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। 1.3 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन के बारे में सीखा है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, स्टेशनरी पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट और लिमिट्स। अब बारी है कि हम कंटिन्यूटी के बारे में समझें। लिमिट्स के बारे में हमने समझ लिया है पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट लिमिट्स इज डन। नाउ वी गो अहेड and understand about the second part. Try understanding, okay? Sometimes the function may not be continuous because maybe the left hand limit is existing, maybe the right hand limit is existing, maybe the function is also defined at that point. But LHL, RHL, they are equal, but they are not equal to the function value defined. Let me take graphical thing to help you understand that. Let's say the function is having LHL existing, the function is having RHL existing at x is equal to a, at x is equal to a, left hand limiting value exists, it is very much defined, right hand limit. If you calculate the function value little before a and little after a, so little after a you calculate and you get exactly the similar value RHL, and LHL and RHL values are equal, but the function value exactly at x is equal to a is somewhere else. But the function value at exactly at x is equal to a is somewhere else. We call this thing discontinuity in the function. Function की value x is equal to a पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफाइंड भी हैं और दोनों इक्वल भी हैं, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। x is equal to a पर फंक्शन भी डिफाइंड है, बट फंक्शन की जो वैल्यू डिफाइंड है डेफिनेशन वाइज वो LHL और RHL के इक्वल नहीं है। जाहिर सी बात है फंक्शन में एक डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि आप बिना पेन उठाए फंक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते, बिकॉज विदाउट लिफ्टिंग द पेन यू कांट कंप्लीट द फंक्शन। हियर यू लिफ्ट द पेन, गो हियर एंड देन अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी। कैसी है डिसकंटिन्यूटी? ये डिसकंटिन्यूटी है कि LHL exists, RHL exists, लिमिट कैलकुलेट करोगे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, पहली शर्त। दूसरी शर्त LHL और RHL इक्वल हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। Because LHL and RHL are equal, limit exists, and even function value at x is equal to a is defined. But discontinuity क्यों है? Discontinuity इसलिए है क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की कुछ और है x is equal to a पर, और फंक्शन की वैल्यू x is equal to a पर कुछ और है, because the limiting value is something else and function value is something else. There is one more way that the discontinuity can exist. तो LHL RHL के इक्वल है लेकिन वो फंक्शन के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों इक्वल भी हैं, बट वो वहां पर फंक्शन की जो वैल्यू डिफाइंड है उसके इक्वल नहीं है। They are not equal to that value. Second scenario is that the function is having limiting value defined. The function is having limiting value defined. The function y is equal to fx is having limiting value LHL and limiting value RHL defined. तो right hand limit और left hand limit दोनों लगभग बराबर हैं। Once again, left hand limit
एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज एग्जिस्टिंग, राइट हैंड लिमिट इज एग्जिस्टिंग, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर भी है। दोनों बराबर होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। If both of them equal, then we say limit is existing. But unfortunately, at x is equal to a, the function is not defined. At x is equal to a, the function is not defined. In this case, at least we had the function defined at x is equal to a, even though that value was not matching with the limiting value. लिमिटिंग वैल्यू से वो वैल्यू मैच नहीं कर रही थी, लेकिन कम से कम फंक्शन डिफाइंड था। यहां फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है x is equal to a पर। Here the function is not even defined at x is equal to a. Okay? This is again a discontinuity, क्योंकि आप पेन उठाए बिना फंक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते। Without lifting the pen, you can't complete the function. You can't complete the graph of the function without lifting the pen. There is a break. Okay? एक ब्रेक हो गया बीच में। डिसकंटिन्यूअस होने का तीसरा पॉसिबिलिटी होगा, the third possibility for a function to become discontinuous is that, आज अगर आपने पूरा सेशन देखा है तो आपने एक 1/x-10 वाला देखा था ग्राफ, 1/x-a. If the function is defined like 1/x-a, little less than a, function will become minus infinity. Little more than a value if you put, function will become plus infinity. a से थोड़ी कम वैल्यू रखोगे फंक्शन माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, a से थोड़ी ज्यादा वैल्यू रखोगे फंक्शन प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। The function will be plus infinity at little more value than x. Function will be minus infinity at little less value than x. So LHL is existing? Yes. LHL is existing? Yes. LHL is existing? Yes. RHL is existing? Yes. But LHL और RHL equal है क्या? LHL और RHL equal है क्या? No. और अगर लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू और राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यूज इक्वल नहीं है तो बिना पेन उठाए आप फंक्शन के कर्व को कंप्लीट नहीं कर सकते। देन विदाउट लिफ्टिंग द पेन यू कांट कंप्लीट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। यू विल हैव टू लिफ्ट द पेन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू कंप्लीट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। समथिंग लाइक दिस 1/x-a। तो ये तीसरे तरह की डिसकंटिन्यूटी हो गई। दिस इज द थर्ड वे अ फंक्शन कैन बिकम डिसकंटिन्यूअस। फोर्थ वे ऑफ अ फंक्शन बिकमिंग डिसकंटिन्यूअस इज दैट LHL or RHL, one of them will not even exist, or maybe both of them will not exist. My dear friends, अगर फंक्शन पहले तरह से डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो हम कहते हैं कि एक पॉइंट फंक्शन का एक वैल्यू कहीं अलग चला गया, आइसोलेट हो गया, अकेला हो गया। This kind of discontinuity is known as isolated point discontinuity. This kind of continuity is known as isolated point discontinuity. Isolated point discontinuity. And अगर फंक्शन डिफाइंड ही ना हो तो हम कहते हैं यहां पर इंफॉर्मेशन मिसिंग है फंक्शन की। x is equal to a पर फंक्शन की इंफॉर्मेशन मिसिंग है। The information of the function is missing at x is equal to a. This kind of discontinuity is known as missing point discontinuity. Missing point discontinuity. My dear friends, you notice that both these discontinuities are having just one little break, which by suitably changing the definition of the function can be filled. ये दोनों तरह की डिसकंटिन्यूटीज में एक छोटा सा ब्रेक है
अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा इंप्रूव कर दे तो गैप वो ब्रेक फिल किया जा सकता है। इसलिए इन दोनों डिसकंटिन्यूटीज को कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज। both these discontinuities are known by the name removable discontinuities. I repeat once again, इन दोनों डिसकंटिन्यूटीज को कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज। Okay, so this is removable discontinuity, this is removable discontinuity, but it's like आपकी हड्डी में थोड़ा सा फ्रैक्चर, मतलब भगवान करे कभी हो ना, थोड़ा सा फ्रैक्चर हो जाए तो उसको फिल किया जा सकता है, क्रैक कहीं डेवलप हो जाए। लेकिन भाई साहब ऐसा हो जाए कि आधी हड्डी नीचे आधी हड्डी ऊपर, तो गए काम से, फिर आप उसको फिल नहीं कर सकते। तो ये irremovable discontinuities हैं। These are irremovable discontinuities. These are the real discontinuities. असल मायने में यही है discontinuities। इसको कहते हैं discontinuity of type 1 और इसको कहते हैं discontinuity of type 2 and this one is known as discontinuity of type 2। इन चारों बातों को डिस्कस करने के बाद एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों बराबर हो। किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी होने के लिए क्या होना चाहिए, LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू, तीनों वैल्यूज डिफाइंड हो और इक्वल हो। अगर LHL RHL बराबर है लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अगर LHL RHL बराबर है लेकिन फंक्शन की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अगर LHL और RHL डिफाइंड तो है लेकिन बराबर नहीं है, तो टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी। LHL RHL में से ही कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी। If LHL RHL are defined and equal but they are not equal to the value of the function, that's isolated point discontinuity. If LHL RHL are equal but the value of the function is not defined there, then a missing point discontinuity. If LHL RHL are defined but they are not equal to each other, then type 1 discontinuity. If out of LHL RHL maybe one or maybe both are defined, not defined even, finally, the worst kind of discontinuity, type 2 discontinuity. Let me take one or two quick examples to help you understand. For example, you go ahead and x is equal to a or x is equal to 2, and I have x square minus 4 upon x minus 4. Sorry, the function is defined as x square minus 4 upon x square x minus 2 when x is not equal to 2. And when x is equal to 2, then the function is defined as, 6. So this is the definition of the function given to you. Check about the discontinuity. Check about the discontinuity at x is equal to 2. Check discontinuity at x is equal to 2. So we check limiting value at x is equal to 2. 0 by 0 format, therefore you differentiate and you differentiate. Now you put the value. Limiting value is 4. Limiting value of the function is 4.
But so now I know limiting value is very much defined, existing, and is equal to 4. But the function value at x is equal to 2 is what? The function value at x is equal to 2 is 6. So we have a function, my dear friends, that is, we have a function that is, ध्यान से समझियो, that goes like this, that goes like this. बहुत ध्यान से समझियो. We have a function that goes like this. At x is equal to 2, limiting value is 4. मतलब 2 के जस्ट पहले या 2 के जस्ट बाद. लेकिन exactly at x is equal to 2, function value is given as 6. So they are not matching. ये x is equal to 2 पे discontinuous है. Discontinuity का type क्या है? Isolated point discontinuity. Given function is discontinuous. Given function is discontinuous at x is equal to 2, and the type of discontinuity is isolated point discontinuity. The type of discontinuity is isolated point discontinuity. Discontinuity का type क्या है? Discontinuity का type है isolated point discontinuity. Let me take one more quick example. That suppose the function is defined as 1 minus root 2 sin x upon cos 2x. Check discontinuity at x is equal to pi by 4. एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया 1 minus root 2 Hello people, those who are continuing, those who are still in the session, मचाना जारी रहे. क्या ही तो बात है. ऐसे ही मेहनत जारी रखो. Just like that. Keep your dedication on, keep your consistency on, keep your marching ahead on, and believe me guys, GATE 2023 belongs to you. You, yes, you watching this session are going to rock. Yes, you watching this session right now. Yes, you deserve it. You belong to it. The GATE belongs to you. The double-digit rank belongs to you. You have not come into this world to be defeated. You have not come into this world to be moderate and to be mediocre and to be compromising. You have come into this world to be a winner, to be a challenger, to arise and awake and to say to the world that I'm here to win this race. I'm not just here to participate in this race. मैं यहाँ सिर्फ दौड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ जीतने आया हूँ. And मैं जीत के ही मानूंगा. उसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है. There is no choice whatever it takes. दिन लगेंगे, रात लगेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, खून बहेगा, जख्म लगेगा, बहने दो, लगने दो. लेकिन एक बार तय कर लिया, एक बार डिसाइड कर लिया, तो सर जाके ही रुकेंगे वहां पर. उसके पहले नहीं रुकेंगे. स्ट्रगल कितना भी हो, कितनी भी बार गिरना पड़े, कितनी भी बार उठना पड़े, कितनी भी बार जख्म लगे, कांटे चुभे, खून बहे, बहने दो. लेकिन मैं झुकेगा नहीं. मैं झुकेगा नहीं. मैं रुकेगा वहीं जाकर. I'm going to stop only when I'll reach there. Because I have decided, and once I have decided, I'm not going to look back. So congratulations if you are still staying in this session, and if you are giving your entire, energy to this session. And x is equal to pi by 4. What is the nature of continuity of the function? Well, if I check it, whether the function is defined at x is equal to pi by 4, then I'm going to get 1 minus
root 2 sine pi by 4 and upon cos 2 into pi by 4. My dear friends, sine pi by 4 is 1 upon root 2 and cos pi by 2 will become 0. So the function is unfortunately not defined at x is equal to pi by 4. This becomes 1 minus 1 and this becomes 0 by 0. The function is not defined at x is equal to pi by 4. Limit exist करती है क्या? Limit at pi by 4 is existing. Yes. 0 by 0 होने के कारण डिफरेंशिएट करेंगे एंड sin x का डेरिवेटिव होगा cos x. cos x का डेरिवेटिव होगा sin 2x. 2 को फिर से 2x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे and I'm going to get minus minus cancelled, root 2 cancelled, cos x upon root 2 sin 2x. cos x upon root 2 sin 2x. cos x की वैल्यू cos pi by 4 and यहाँ pi by 4 रखोगे तो sin. Here if you put pi by 4 it will become sin pi by 2. It will become sin pi by 2. Cos pi by 4 is 1 upon root 2 and sin pi by 2 is 1. Yes sir, limit is existing and limit is 1 by 2. Yes sir. So limit x tending to pi by 4 fx is existing, but at x is equal to pi by 4 function value is not defined. x is equal to pi by 4 पर function की value defined नहीं है. ये हो जाएगा missing point discontinuity. Function is discontinuous and the type of discontinuity is missing point discontinuity. The type of discontinuity is missing point discontinuity. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. Now I take you to the third thing, and the third thing is differentiability. Differentiability. What is differentiability? Differentiability is that what is the derivative. जो आज मैंने सबसे पहले करवाया आपको, जो सबसे पहले, wait a moment. Just wait a moment, huh?
I'm sorry for the disruption. डिफरेंशिएबिलिटी समझने से पहले हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा और हमें समझना होगा डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट क्या करता है. डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स व्हाट ज्योमेट्रिकली. Geometrically, what exactly the derivative represents? Geometrically, derivative represents the slope of the tangent. Geometrically, the derivative represents the slope of the tangent. Okay? Derivative का मतलब limit delta x tending to 0, delta y by delta x. Okay? And I can very clearly see that delta y by delta x is tan theta. I write it as dy by dx, and dy by dx बन गया tan theta, and tan theta बन गया slope of the tangent. Slope of the tangent. Tangent का slope represent करता है derivative. ये बात अगर आपको समझ में आती है तो डिफरेंशिएबिलिटी समझना दुनिया का सबसे आसान काम है. Once you understand this, understanding differentiability is a very easy thing. My dear friends, sometimes it might so happen that the function is continuous, but its derivative is not continuous. अगर आप continuity समझे तो डिफरेंशिएबिलिटी समझने में आसानी होगी. अगर आप कंटिन्यूटी समझे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है क्योंकि लिमिट कुछ और है, फंक्शन की डिफाइंड वैल्यू कुछ और है. क्योंकि लिमिट कुछ और है और फंक्शन की डिफाइंड वैल्यू है ही नहीं. मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. क्योंकि लिमिट ही बराबर नहीं है आपस में, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी. क्योंकि लिमिट ही पता नहीं की जा सकती. टाइप 2 discontinuity. You understand discontinuity? One, that limit exists, even the function value is defined, but the limit is not equal to the function value. Isolated point discontinuity. Then limit exists and even the limit exists and limit is equal, LHL, RHL, equal, but unfortunately the function value doesn't exist. Missing point discontinuity. If limits are not equal to each other, that becomes type 1 discontinuity. And if limits themselves are not defined, that becomes the worst kind of discontinuity. Now, sometimes the function may be continuous, but the function may be continuous, but the derivative of the function may not be continuous. Sometimes it might so happen that the function is continuous, but the derivative of the function is not continuous. Let's take the example of this kind of a function. And even sometimes the function may be discontinuous and also the derivative of the function may be discontinuous. Also, the function is discontinuous and also the derivative of the function is discontinuous. ये फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस नहीं है. This function is continuous at x is equal to a, at x is equal to a. Function is continuous. आप बड़े आराम से देख सकते हो कि बिना पेन उठाए आप फंक्शन के ग्राफ को कंप्लीट कर सकते हो. तो x is equal to a पर फंक्शन तो कंटिन्यूअस है. फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस नहीं है. Why? Because x is equal to a के जस्ट पहले डेरिवेटिव यानी कि स्लोप, डेरिवेटिव यानी कि टेंजेंट ऐसा कुछ है. x is equal to a के जस्ट पहले फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है.
x इज इक्वल टू a के जस्ट बाद फंक्शन का डेरिवेटिव x इज इक्वल टू a के जस्ट बाद फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है और x इज इक्वल टू a पर कॉर्नर होने के कारण दो टेंजेंट्स एग्जिस्ट करती हैं. Just before x is equal to a, slope of the tangent is positive. Just after x is equal to a, slope of the tangent is negative. And there you have a corner point where two tangents are existing. So whether you call the first tangent as the derivative or second tangent as the derivative, function is discontinuous, but its derivative doesn't have a discontinuity. Its derivative doesn't have a continuity. x is equal to a पर दो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं and x is equal to a dy by dx found just before a and dy by dx found just after a, they don't match. They don't match. ये मैच नहीं करते हैं. Okay? They don't match, my dear friends. Cool? ध्यान से समझियो. Sometimes, और जब ये मैच नहीं करेंगे तो हम कहेंगे फंक्शन, अब हम डेरिवेटिव डिफाइन ही नहीं कर सकते x is equal to a पर. Now we can't even define derivative at x is equal to a, because at x is equal to a, if we define derivative just before a, then just before a, it will look like this. And if we define the derivative just after a, it will look like this. Red वाला derivative है just before a, red वाला derivative है just before a, और ब्लैक वाला डेरिवेटिव है जस्ट आफ्टर ए. अगर ये दोनों डेरिवेटिव्स को प्लॉट करो तो ब्रेक दिखेगा. y dash just before a is something else, y dash just after a is something else. So if you plot these y dash values, then there will be a break. We call that such a function is not differentiable. Not differentiable is equivalent to derivative being discontinuous. एक फंक्शन का डिफरेंशिएबल ना होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव का डिसकंटिन्यूअस हो जाना. Not differentiable. If a function is not differentiable, its derivative will become discontinuous. क्योंकि अगर आप रेड वैल्यू अगर आप y डैश की वैल्यूज प्लॉट करो x के रिस्पेक्ट में, तो रेड वाली वैल्यू x इज इक्वल टू a पर रेड जस्ट पहले आपको कुछ पॉजिटिव स्लोप मिला है और x इज इक्वल टू a के जस्ट बाद आपको कुछ नेगेटिव स्लोप मिला है. डेरिवेटिव में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी हो और डिसकंटिन्यूअस भी हो और नॉट डिफरेंशिएबल भी हो. This is a function discontinuous and this is also a function not differentiable. क्योंकि उसी पॉइंट पर जस्ट पहले अगर आप स्लोप डिफाइन करोगे ये है और उसी पॉइंट पर जस्ट बाद अगर आप डिफाइन करोगे स्लोप तो ये है. हालांकि दोनों ही स्लोप पॉजिटिव है लेकिन दोनों में डिफरेंस है. जस्ट पहले स्लोप की वैल्यू ज्यादा है और जस्ट बाद स्लोप की वैल्यू कम है. Just before the slope value is more and just after the slope value is less. And we say that function discontinuous and also not differentiable. My dear friends, please note down that if a function is continuous, it may or may not be differentiable.
But if a function is discontinuous, it is definitely going to become not differentiable. If a function is continuous, it may or may not be differentiable at that point. But if a function becomes discontinuous, it's definitely going to be not differentiable. अगर यही function corner ना बनता, ऐसा होता, तो continuous होने के साथ साथ ये differentiable भी होता. लेकिन continuous रहते हुए भी corner बन गया तो differentiable नहीं है. If it was continuous, it may have been differentiable if it was a smooth curve. If it is continuous with a corner, then it is not differentiable at that corner point. We call it cusp. C-U-S-P. Point of cusp. C-U-S-P. Okay? But if a function becomes discontinuous, it will definitely be not differentiable. Now, opposite is not true. In opposite, you say, if a function is differentiable, that means its derivative is continuous. Then it's definite that the function must have been continuous. Derivative continuous है अगर, तो function तो continuous रहा ही होगा. जिस कर्व का slope continuous हो, slope में एक sudden change ना आए, वो कर्व तो continuous रहेगा ही रहेगा. If a curve is having the slope not having any sudden change, then the curve is naturally going to be continuous. My dear friends, these are the conclusions that you should remember. If a function is continuous at x is equal to a, if a function is discontinuous at x is equal to a, if a function is differentiable at x is equal to a, continuous, then differentiable हो भी सकता है, differentiable नहीं भी हो सकता है. Example, continuous है तो differentiable है सारे ही दुनिया के जितने कर्व्स हैं. किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है. बट कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल ना हो, कस्प वाला जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, the example of a function having a corner point. But if a function is discontinuous at x is equal to a, then it will be surely not differentiable. तो वो surely differentiable नहीं होगा. But एक फंक्शन अगर differentiable है तो वो continuous जरूर होगा. If a function is differentiable, क्योंकि आप देख सकते हैं differentiable तभी मिलता है, differentiable सिर्फ तभी possible है जब फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस हो. हाँ, कंटिन्यूअस होने पर नॉट डिफरेंशिएबल भी पॉसिबल है. I know it is a little confusing, but no matter what, please remember these conclusions. डिफरेंशिएबल होने का रास्ता सिर्फ कंटिन्यूअस से होकर जा सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस होना इस बात की गारंटी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ही होगा. डिफरेंशिएबल होने का रास्ता सिर्फ कंटिन्यूअस से होकर ही जा सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस होना इस बात की गारंटी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा.
A function becoming differentiable is possible only if the function is continuous. But only a function becoming continuous is not a guarantee that the function will be differentiable. I tried to explain it in as precise a manner as possible. One popular function that is usually asked in exams is mod function. Differentiability की जब बात आती है तो mod function is a very popular function. For example, suppose I take fx is equal to mod x. Check continuity and differentiability. Check continuity and differentiability at x is equal to 0. ओके तो सबसे पहले तो ये समझ लो मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है। मॉड x की डेफिनेशन ये है दोस्त कि मॉड के अंदर अगर पत्थर है, मॉड के अंदर अगर पत्थर है तो पत्थर की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन की डेफिनेशन होगी प्लस पत्थर, और फंक्शन पत्थर की नेगेटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन की डेफिनेशन होगी माइनस पत्थर, सो दैट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहे। जब पत्थर की वैल्यूज नेगेटिव हो तो बाहर से एक माइनस साइन लगाएंगे, सो दैट जब पत्थर की वैल्यूज रखें यहां तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोज fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5। अब इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन की डेफिनेशन होगी प्लस x माइनस 5 जब x माइनस 5 पॉजिटिव हो, और फंक्शन की डेफिनेशन होगी माइनस x माइनस 5 जब x माइनस 5 नेगेटिव हो। इसका मतलब समझे गया? इसका मतलब फंक्शन की डेफिनेशन है प्लस x माइनस 5 when x is greater than 5, and function की definition है minus x plus 5 when x is less than 5. Means x is greater than 5, then greater minus is smaller, positive value. But when x is less and 5 is more, then again greater minus is smaller, positive value. mod एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें हर नेगेटिव वैल्यू धुलकर पॉजिटिव वैल्यू में बदल दी जाती है। मॉड एक ऐसा डिटर्जेंट केक है जिसमें हर नेगेटिव वैल्यू रूपी दाग छुड़ाकर सफेदी में, पॉजिटिव रूपी सफेदी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्यों चौंक गए? So mod is like a washing machine. Mod is like a washing machine. Mod is like a detergent cake through which you can wash any minus sign away and convert it to plus sign. Let me take one more example to help you understand this. That suppose fx is defined as x minus x plus 30. Now what does this mean? This means it will be equal to positive of x plus 30 when x plus 30 is positive, and it will be equal to negative of x plus 30 when x plus 30 is negative, which translates into x plus 30 when x is greater than minus 30, and minus x minus 30 when x is less than minus 30. My dear friends, x minus 30 से ज्यादा है तो आप वैल्यूज रखकर देख लो। x minus 30 से ज्यादा मतलब 0, minus 10, minus 5, 10, whatever, तो आप 0 रखकर देख लो, पॉजिटिव हो गया। minus 10 रखकर देख लो, पॉजिटिव हो गया। minus 20 रखकर देख लो, पॉजिटिव हो गया।
एंड -30 से कम मतलब -40, -40, -50, -60. So I put x is equal to -40. It becomes +10 again. I put x is equal to -50. I put x is equal to -50. It becomes positive again. Okay? Mod is a washing machine in which every spot of minus sign will be washed away in the final value, and the final value is going to become positive, positive, positive. The final value is only going to be positive, positive, positive. The final value is going to be only positive, positive, positive. Greater, minus, smaller. Here again, greater, greater, minus, smaller value. So I hope now you will be able to comprehend. मुझे उम्मीद है कि अब आपको मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू दे दी जाए तो आप पहले तो उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर लोगे. अब जरा वापस आते हैं अपने प्रॉब्लम पर. That fx is equal to mod of x minus 1. Check discontinuity and differentiability at check discontinuity and differentiability at x is equal to 1. x is equal to 1 पर continuity discontinuity चेक करें और x is equal to 1 पर differentiability चेक करें. So first of all, let's put the definition. It's going to become plus x minus 1 if x minus 1 is positive, and it's going to become minus x minus 1 if x minus 1 is negative. So it will become x minus 1 if x is greater than 1, and it will become 1 minus x if x is less than 1. Cool? Function value x is equal to 1 पर है 0. तो सबसे पहले हम continuity चेक करेंगे. To check the continuity, I'm going to check x is equal to 1 per function value. X is equal to 1 per function value is 0. And then I'm going to check left hand limit. Left hand limit means function value when x is tending to 0 from little less, when x is tending to 1 but a little less than 1. Left hand limit means what? X tending to 1 but little less than 1. Little less than 1, little less than 1. Then 1 minus 0.99999, which is again approximately 0. RHL means what? RHL means the value of the function when x is little more than 1. When x is little more than 1, then the definition of the function is x minus 1. जब x थोड़ा सा ज्यादा है 1 से, तो फंक्शन की डेफिनेशन है x minus 1. I take little more than 1. Once again, value is roughly approximately 0. LHL, RHL function value तीनों है 0, 0, 0. Function है continuous. LHL is equal to RHL is equal to the function value at x is equal to 1. Function x is equal to 1 per continuous. Function is continuous at x is equal to 1. But now let us check differentiability. अब चेक करते हैं differentiability.
Now let us check differentiability. Differentiability, my dear friends, अगर x less than 1 पे अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, f dash x अगर हम फाइंड आउट करें x less than 1 पर, तो वो हो जाएगा -1। और अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें at x value little more than 1, hello people, focus here, at x value little more than 1, तो डेरिवेटिव हो जाएगा x का 1 और 1 का 0 प्लस 1। x इज इक्वल टू 1 पर दो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। at x is equal to 1, two derivatives are existing, and therefore function is not differentiable at x is equal to 1. This function is not differentiable at x is equal to 1. This function is not differentiable at x is equal to 1. x is equal to 1 पर function differentiable नहीं है. Wow. Lovely. This is how you are going to understand differentiability. Very interestingly, not all mod functions are going to be losing their differentiability. ये मत सोच लेना कि सारे mod functions के साथ ये होगा. Not all mod functions are going to do like this. For example, mod x if we take x into mod x, if we take x into mod x, then the definition of the function will become x into positive x when x is greater than 0 and x into negative x when x is less than 0. It becomes plus x square when x is greater than 0. It becomes minus x square when x is less than 0. Let us check everything at x is equal to 0. So सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे. कंटिन्यूटी चेक करेंगे x is equal to 0 पर, चाहे ये डेफिनेशन यूज कर लो या ये डेफिनेशन यूज कर लो, फंक्शन की वैल्यू है whether you use x square वाला definition or x minus x square definition, function is 0. What about left hand limit? Left hand limit means function value at little less than 0. Little less than 0, the function value is minus x square, and little less than 0 means you put 0 here. So it becomes little less than 0 means minus 0.00001, and you are going to get 0 only. At x is equal to little more than 0, at x is equal to little more than 0, definition of function is plus x square. Little more than 0. पहले वाले में little less than 0 रखना था. हालांकि फाइनल रिजल्ट मैटर नहीं करेगा, लेकिन लेट्स बी एक्यूरेट. ये भी approximately 0 हो जाएगा. Even this is going to become approximately 0. So LHL is equal to RHL is equal to the function value at 0. Function is continuous at x is equal to 0. Let us now check differentiability. अब जरा differentiability check करते हैं.
Let us now check differentiability. Differentiability. Derivative find out करो जरा. F dash x will become equal to plus 2x and minus 2x, x greater than 0, x less than 0. Little more than 0 पर भी आपको 0 ही मिलेगा डेरिवेटिव, little less than 0 पर भी आपको 0 ही मिलेगा डेरिवेटिव. So the derivative value at little less than 0 is also 0, and the derivative value when x is little more than 0 is also 0, क्योंकि दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल हैं, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है. Graphically, if you try understanding, something fantastic is going on. कि ये वाला x is equal to 1 पर continuous तो था लेकिन differentiable नहीं था. That this one was continuous at x is equal to 1. This one was continuous at x is equal to 1. But this one was not differentiable at x is equal to 1. Not differentiable at x is equal to 1. And this one is continuous, and not only continuous but also differentiable. क्यों? ग्राफिकली समझने की कोशिश करो तो काफी मजेदार घटना हो रही है बैकग्राउंड में. दैट ये है y is equal to x minus 1, x greater than 1 पर x की वैल्यूज 1 से ज्यादा है, तो ये है y is equal to x minus 1. y is equal to x minus 1 लाइन कुछ ऐसी होती है. x is equal to 0 पर y की वैल्यू -1, बाकी पॉजिटिव स्लोप के साथ. ये ध्यान रखना, इसमें वैलिड सिर्फ यही पार्ट है, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 पर ही ये डेफिनेशन वैलिड है. y is equal to x minus 1 and y is equal to x 1 minus x नेगेटिव स्लोप है. नेगेटिव स्लोप है, और जब x 0 होगा तो y 1 होगा. When x is going to be 0, तो पहली वाली लाइन पर y -1 होता, लेकिन दूसरी वाली लाइन में अगर x को 0 रख दूं तो y +1 होगा. तो ये लाइन यहां से जाएगी. ऑफ कोर्स ये वाली लाइन सिर्फ तब वैलिड है, ये वाली लाइन सिर्फ तब वैलिड है जब x लेस देन 1 हो, यानी सिर्फ ये वाला पार्ट. That means only this part. This part is not valid. And y is equal to x minus 1 is valid only when x is greater than 1. So this part is not valid. Clearly there is a corner at x is equal to 1. इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस तो हुआ लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, क्योंकि एक कॉर्नर है वहां पर x is equal to 1 पर. इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस तो हुआ लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ. That's why the function became continuous but not differentiable. But in this case, my dear friends, but in this case, I have y is equal to, for x greater than 0, y is equal to plus x square is valid. Y is equal to plus x square is valid. And for x less than 0, y is equal to minus x square is valid. For x less than 0, y is equal to, ध्यान से समझियो, y is equal to minus x square is valid. So for positive values of x, y is equal to plus x square is valid. For negative values of x, y is equal to minus x square is valid. And my dear friends, you very interestingly notice that there is no corner point this time.
And that's why function is not only continuous but also differentiable. फंक्शन सिर्फ कंटिन्यूअस ही नहीं है बल्कि डिफरेंशिएबल भी है. ये ध्यान रखना, y इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ इधर वैलिड नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज के लिए वैलिड है. The graph of y is equal to plus x square is valid only for positive values of x, and the graph of y is equal to minus x square is valid only for negative values of x. There is no corner point, and that's why we get differentiability at x is equal to 0. I now take you to the second chapter, and the second chapter luckily is not as big as the first chapter. The partial derivatives and its applications. The partial derivatives and its applications. अभी तक आपने देखा कि I'll be back in 2 minutes, 5 minutes. Just सर आप 13 जुलाई से सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट लोगे? वांट टू नो मोर अबाउट इट. Sir, how do you have this much determination? Because of every single student who have a conviction to reach there. एक स्टूडेंट सफल होता है और आप यकीन नहीं करोगे, हमको लगता है जैसे हम सफल हो गए. मेरे कम से कम इस समय कम से कम डबल डिजिट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आईआईसी बैंगलोर में, एंड डबल डिजिट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आईआईटी खड़गपुर में, डबल डिजिट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आईआईटी कानपुर में. अगर मैं आईआईटी कानपुर चला जाऊं तो कम से कम 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके साथ में डिनर करूंगा. अगर मैं आईआईसी बैंगलोर चला जाऊं, आईआईटी खड़गपुर चला जाऊं, एंड गेल में 2 स्टूडेंट्स हैं, निडी मुंबई में अब तक मेरे 4 स्टूडेंट्स जा चुके हैं पिछले साल से अब तक, और बीएआरसी में 2 स्टूडेंट्स हैं मेरे. शायद मुझे लगता है कि कोई भी नामी गिरामी इंस्टीट्यूट और कोई भी नामी गिरामी पीएसयू ऐसा नहीं होगा जिसमें कम से कम मेरा एक स्टूडेंट झंडा गाड़ी बैठा ना हो. 4 से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ईएस ऑफिसर हैं, एक स्टूडेंट बहुत जल्दी आईएएस ऑफिसर बनने वाला है. So there is not even a single premium most institute and not even a single top class PSU where at least one of my student is not there currently. गेल में विशेष सिंह, ईएस ऑफिसर चारुदत्ता सालुंखे, निडी मुंबई में सोमकांस्कार और अभिषेक सालुंखे, आईसी बैंगलोर में कार्तिकेय भारद्वाज इस बार, और वन मोर स्टूडेंट रंजू पी रमेश इन आईटी कानपुर, मानवेंद्र सिंह इन आईटी कानपुर, and
विवेक इज इन IIT खड़गपुर, कितने तो याद नहीं रह जाते हैं, एंड कीर्ति गुप्ता इन BARC. So there are so many of them. इनके बहुत सारे वीडियोस इन स्टूडेंट्स के साथ जिनके मैंने नाम लिए, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स के साथ आप मेरे वीडियोस देख भी सकते हैं. गेल में विशेष सिंह, इनके साथ मेरे YouTube पर वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं. पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड इट्स एप्लीकेशंस. तो मेरी डिटर्मिनेशन का सोर्स क्या है? मेरी डिटर्मिनेशन का सोर्स सिर्फ एक है, और वो एक सोर्स है. What is the source of my determination? The source of my determination is only one, and that one source is the success of yours. जिस दिन एक स्टूडेंट सफल होता है और किसी PSU में जाकर बैठता है, ES ऑफिसर बनता है, IIT में जाकर बैठता है, आहा, मैं सातवें आसमान पर होता हूं. शायद वो स्टूडेंट उतना खुश शायद ना होता हो जितना मैं खुश होता हूं. उड़ता ही फिरूं इन फिजाओं में कहीं. Partial derivatives. What exactly is partial derivative? So, second chapter and the very first topic. What exactly is the partial derivative? ये partial derivative है क्या? What exactly is a partial derivative? Sir, try understanding. ध्यान से समझियो. जैसे कौन का वॉल्यूम है? Now cone का वॉल्यूम 1/3 pi r square h. अब आप r के रिस्पेक्ट में अगर वॉल्यूम में चेंज कैलकुलेट करना चाहो या h के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में चेंज कैलकुलेट करना चाहो, वॉल्यूम तो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है. वॉल्यूम इज डिपेंडिंग अपॉन टू वेरिएबल्स. So suppose you want to calculate the change in volume with respect to r, or suppose you want to calculate the change in volume with respect to h. How do you do that? कैसे करने वाले हो आप? How exactly are you going to do that? Well, as far as our earlier knowledge is concerned, it's just not possible. नहीं संभव है जिस तरह से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते आए हैं. ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि जब हम r के रिस्पेक्ट में, ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि जब हम r के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उस समय हम h को वेरिएबल ही ना माने, और ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि जब हम h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो हम r को वेरिएबल ही ना माने. एंड देन आई एम गोइंग टू गेट 1/3 pi r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r. h को हमने वेरिएबल ही नहीं माना. h we are not even assuming as a variable. And 1/3 pi r square, h को हमने वेरिएबल माना, r को वेरिएबल ही नहीं माना. r we are not even assuming as variable. So I'm going to get something like this. Okay, 2 pi r h by 3. अगर हम h को वेरिएबल ही ना माने और सिर्फ r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, और अगर हम r को वेरिएबल ही ना माने h के रिस्पेक्ट में, but doesn't seem like some wrong thing we are doing. ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कुछ ऐसे कैसे भाई कि आप h को वेरिएबल ही नहीं मान रहे या फिर आप r को वेरिएबल ही नहीं मान रहे. What the hell? And how can you do that? How can you do that? I don't know, but I know one thing कि इन दोनों को कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव. और क्योंकि इनको एक अलग तरह से डिफाइन किया गया है कि एक के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दूसरे को वेरिएबल नहीं मानना है, दूसरे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले को वेरिएबल नहीं मानना है, इसलिए प्लीज इन्हें dv by dr या dv by dh मत लिखने लगना, क्योंकि ये आपके ऑर्डिनरी नॉर्मल डिफरेंशिएशन को फिट नहीं होते. Because they are not fitting your ordinary normal differentiation process. Therefore, don't write them dv by dr or dv by dh. People found a new notation to represent them. लोगों ने एक नया तरीका ढूंढा इनको रिप्रेजेंट करने का. इस तरह के डेरिवेटिव्स को कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स.
These kind of derivatives are known by the name partial derivatives. These kinds of derivatives are known as partial derivatives. For example, suppose there is a function of x and y as tan inverse y upon x. Then I can find out the derivative of this function with respect to x, but जब ये करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा f का चेंज अपॉन x का चेंज, बट उस समय हम y को वेरिएबल ही नहीं मान रहे. At that time we are not even assuming y as a variable. Then tan inverse something का derivative होता है 1 plus 1 upon 1 plus something square. हाँ, y upon x को फिर से डिफरेंशिएट करोगे y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए. Treating y as constant, you will differentiate y upon x again. So treating y as constant, you will differentiate y upon x again. So 1 upon x का derivative will become minus 1 upon x square, minus 1 upon x square, and here we have x square plus y square upon x square. I'm going to get minus y upon x square plus y square. If I try finding out the partial derivative of the function with respect to y, what does it mean? It means derivative of function with respect to y, treating x not as a variable. x को वेरिएबल ना ट्रीट करते हुए आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करो. तो you are going to get once again tan inverse something, derivative becomes 1 upon 1 plus something square. And then treating x not to be a variable, differentiate rest part. Differentiate rest part. So you are going to get 1 upon x in numerator and x square plus y square upon x square in denominator. X and x get cancelled and you get x upon x square plus y square. My dear friends, notice that if I multiply del f by del x with x, and if I multiply del f by del y with y and take the difference, then it's going to become 0. Sometimes they will ask things like this, that x fx minus y fy value, find out. Oh, sorry, if I add them, it becomes 0. Okay? कई बार इस तरह की चीजें वो पूछ सकते हैं कि x fx plus y की वैल्यू फाइंड आउट करो. If the function is like this, find x fx plus y fy. Actually, partial derivative with respect to x is represented as fx and partial derivative with respect to y is represented as fy. Similarly, my dear friends, wait a moment, I need to add more slides. जब भी आपको fx लिखकर आ जाएगा उसका मतलब होगा del f by del x.
जब भी आपको fy लिखकर आ जाएगा उसका मतलब होगा del f by del y। जब भी आपको fxx लिखकर आ जाएगा उसका मतलब होगा सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। Whenever you are going to have fyy, it means second derivative with respect to y. And whenever you are going to have fxy, it will mean second derivative of f such that first it was differentiated with respect to x and again it was differentiated with respect to y. पहले उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, फिर उसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। Cool? So this is how you can do the things. कैसा भी फंक्शन दे दिया जाए, no matter which kind of function they give you. For example, suppose the function is given as log of x square plus y square. Then find out del 2 of this function. The function है log of x square plus y square, then del 2 of this function you have to find out. Now what will be the del 2 of this function? ध्यान से समझियो। del 2 find out करने के ये del 2 है क्या? del 2 is nothing but del 2 साइड में नोट कर लो। del 2 of something means del 2 by del square by del x square of that plus del square by del y square of that. इसे कहते हैं Laplacian operator. This is known as Laplacian operator. Okay? अब आप इसको पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो. First you differentiate with respect to x. If you differentiate with respect to x, it will become 1 upon x square plus y square into differentiation with respect to x again. So it will become 2x upon x square plus y square. Now you need to differentiate this again with respect to x. So del by del x again of this whole thing. That will become denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator square. I suppose if you simplify this, you are going to get 2x square plus 2y square minus 4x square. So 2x square minus 4x square will become minus 2x square. So you are going to get 2 common. Denominator into numerator का derivative, yes, minus numerator into denominator का derivative, yes. So 2x square minus 4x square will become minus 2x square. So 2y square minus 2x square. Finally, I have got the second derivative of function with respect to x, 2 common, y square minus x square upon x square plus y square का whole square. क्योंकि सिमेट्रिक है पूरी तरह से x और y में, इसलिए सेम बात y के लिए भी वैलिड होगी. Del psi by del y will become 1 upon x square plus y square. Then x का derivative 0, y square derivative is 2y. So the first order derivative becomes 2y upon x square plus y square. 2y upon x square plus y square. Now I differentiate this again with respect to y. So denominator into numerator का derivative minus numerator into denominator का derivative upon square of the denominator.
इसको सिंप्लीफाई करोगे 2y² minus 4y² will become minus 2y². So del 2 psi upon del y2 will become 2 common x² minus y² upon x² plus y² whole square. Very clearly, if you add them together, they will cancel each other. And del square psi, which means del square psi by del x square plus del square psi by del y square will become equal to 0. Del square psi by del x square plus del square psi by del y square will become equal to 0. I'm just stretching my neck. Okay. Similarly, any second order derivative and you can find out. Now sometimes you might have function of a function given. What do I mean by function of a function? By function of a function I mean this. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. As I take you to the next thing in partial derivative. Partial derivatives में ये हो गया. And I take you to the next thing. Next thing is what? Next thing is, फिर से ये कोन के वॉल्यूम का एग्जांपल लेते हैं 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. I know that I'm not fully convinced. I'm not fully satisfied. I don't feel like, it's being technically very sound and sophisticated thing. Yet I'm doing something that don't treat h as variable when you differentiate with respect to r, and don't treat r as a variable when you differentiate with respect to h. जब आप h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो r को कांस्टेंट, ये क्या बात हुई? वेरिएबल तो r और h दोनों हो सकते हैं, लेकिन जब कह रहा है प्रोसीजर क्या कहता है कि जब h के रिस्पेक्ट में करो तो r भाई नहीं, r को वेरिएबल नहीं ट्रीट करना, और जब r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो h को वेरिएबल नहीं ट्रीट करना. Then don't treat h as a variable. Okay? So my dear friends, I know that del v by del r can be defined as the derivative of r, del v by del r can be defined as the derivative of r if you keep h as constant. So 1/3 pi 2r multiplied by h. And I know that I can find out the derivative of volume with respect to h like my ordinary derivative, but keeping r as a constant thing. So if I keep r as a constant thing, then derivative of h becomes 1. But now the real question arises that what if r and h both are changing? But now the real question arises that what if both r and h are changing? Both r and h are changing. Then what exactly are you going to do? जब r और h दोनों चेंज हो रहे हों, if both r and h change simultaneously, then we go to our roots, our very fundamental approach, that let's say r becomes r plus delta r, h becomes h plus delta h, then volume becomes v plus delta v. वैसे हमने अभी तक सिर्फ एक जुगाड़ फॉलो किया है, एंड इस जुगाड़ को कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव.
बट हमें पता है कि यार ऐसे कैसे कर सकते हैं कि h को वेरिएबल ही नहीं मान रहे या कभी r को वेरिएबल ही नहीं मान रहे, ये तो चीटिंग है. How can you do like this, that you are not even assuming r as a variable or h as a variable? This is not done. This is not a legitimate thing to do. Cool. This is not a genuine thing to do. In reality, both will change simultaneously. So I go to my fundamentals that volume, changed value of volume can be written as changed value of volume can be written as something like this. And then, my dear friends, I take V to that side because I'm interested only in the change in volume. And I multiply R square with H. I multiply R square with delta H. I multiply delta R square with H. And I multiply delta R with delta H. And I multiply 2R delta R with H. And finally I multiply 2R delta R with delta H. 2R delta R with delta H. And of course, I take original volume 1 by 3 pi r square h to right hand side. I notice that original volume is going to get cancelled. Not only that, I also notice that higher order differential terms are negligible. Delta h छोटू quantity. Delta r का square हो गया तो छोटू quantity into छोटू quantity becomes negligible. Delta R और delta H का product आ गया. The product comes, once again it becomes छोटू quantity into छोटू quantity becomes negligible. The product of delta R and delta H, छोटू quantity into छोटू quantity becomes negligible. Now I have only two terms remaining. अब केवल दो terms remaining हैं. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. So I get delta V is equal to 1 by 3 pi and R square delta H and 2RH delta R. My dear friends, if R and H both are changing simultaneously, ध्यान से समझियो. If R and H both are changing simultaneously, then I get 1 by 3 pi R square into delta H and I get 2 pi R H by 3 into delta R. And now you notice something amazing. Please notice. Now you notice something amazing. 1 by 3 pi R square. 1 by 3 pi R square is nothing but the partial derivative of volume with respect to H. And you notice something amazing going on here. 2 pi RH by 3 is nothing but 2 pi RH by 3 is nothing but partial derivative of volume with respect to R. 2 pi RH by 3 वॉल्यूम का पार्शियल डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में है और 1 by 3 pi r स्क्वायर वॉल्यूम का पार्शियल डेरिवेटिव h के रिस्पेक्ट में है. माय डियर फ्रेंड्स, वी से कि ओ हो कलाइयों के सहारे खेल दिया है. 1 by 3 pi r स्क्वायर h है वॉल्यूम का h के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल चेंज इन h एंड 2 pi RH by 3 है वॉल्यूम का R के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल चेंज इन R. पार्शियल डेरिवेटिव सच्चाई तो नहीं है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने में आपकी मदद जरूर कर सकता है. Partial derivative is not the reality, since in the reality both the variables will change simultaneously. Partial derivative is a fictitious hypothetical scenario that h is not a variable, that
R is not a variable. Partial derivative may be a cooked up story, but it can always help you to find out the real change in volume if R and H are indeed both behaving like a variable. पार्शियल डेरिवेटिव एक दिमाग का फितूर लगता है कि यार H को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, हाँ, R को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी ना होती है. एक्चुअली इन रियलिटी मुझे पता है R और H दोनों ही चेंज हो रहे होंगे. एक दिमाग का फितूर पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन अल्टीमेटली आपको टोटल चेंज कैलकुलेट करने में हेल्प कर सकता है. इट कैन हेल्प यू कैलकुलेटिंग द टोटल चेंज इन अ फंक्शन. This is how you calculate the total differential of a function with the help of partial derivatives. My dear friends, we generalize कि अगर कोई फंक्शन x और y दोनों का फंक्शन है तो उस फंक्शन में टोटल चेंज लिखा जा सकता है फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय x में टोटल चेंज, फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय y में total change. The total change of the function can be written as something like this. Of course, sometimes we replace this duck thing with d, so we write df is equal to del f by del x dx and del f by del y dy, del f by del y dy. Okay, some beautiful problems can be formulated on this basis. इसकी बेसिस पर कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक फ्लोइंग फ्लूइड है. क्या है? एक फ्लोइंग फ्लूइड है और उसमें टेम्परेचर डिफाइंड है x square plus y square. There is a flowing fluid in which temperature is defined as x square plus y square, and that flowing fluid has velocity u given as 3x and velocity v given as 2y. Calculate the rate of change of temperature at point 1, 1. Calculate the rate of change of temperature at x is equal to 1 and y is equal to 1. इस प्रॉब्लम को वही कर सकता है जिसे टोटल डिफरेंशियल का ये फॉर्मूला पूरी तरह से समझ में आता हो. This problem can be attempted by someone who understands the total differential formula. This one, that टेम्परेचर में टोटल चेंज को हम लिख सकते हैं del t by del x dx plus del t by del y dy. Let us now divide by time. And if we divide by time, we are going to get x displacement upon time, and here we are going to get y displacement upon time. X displacement upon time is nothing but u velocity, and y displacement upon time is nothing but v velocity. X displacement upon time is nothing but u velocity, and y displacement upon time is nothing but v velocity. Okay? So I can very clearly see now that rate of change of temperature with respect to time is u del t by del x plus v del t by del y. U value is given as oh bhai sahab, there is no storm or something.
I don't know what happened. U value is given as 3x and del t by del x is 2x. And V value is given as 2y and del t by del y is again 2y. Finally, I get rate of change of temperature with time as 6x square plus 4y square. Hello, at x is equal to y is equal to 1, this will become 6 into 1 plus 4 into 1. This will become 10 degrees Celsius per second. 10 degrees Celsius per second. Okay? टोटल डिफरेंशियल पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं. Number of problems can be formulated on total differential. Hello friends. 13 जुलाई से जो रिपीटर्स का प्रोग्राम में स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें 13 जुलाई से जो रिपीटर्स का प्रोग्राम मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उस रिपीटर्स के प्रोग्राम में मैं कोई भी कोर्स पढ़ाने वाला नहीं हूं, सिर्फ प्रैक्टिस करवाने वाला हूं. ये उनके ही लिए है जो एक बार सिलेबस खत्म कर चुके हैं. This is for them who have finished the syllabus once. 13th of July, I'll be starting repeaters course. Repeaters course, I'm going to take one subject and in 10 days, I'm going to do only practice. That's it. Only practice. That's it. Cool. And then I'll be conducting 5 days, one test, 5 days, one test. 10 days, one subject completed. Again 10 days, one subject completed. 5 days, and then Monday to Friday, there is practice. Saturday, Sunday test. Monday to Friday, practice. Saturday, Sunday test. So I'll be giving bigger subjects 2 weeks and smaller subjects like vibrations will be done in 1 week, mechanics will be done in 1 week, SOM will be done in 2 weeks, FM will be done in 2 weeks, basic thermodynamics will be done in 2 weeks, heat transfer will be done in 2 weeks, machine design will be done in 1 week, like that. TOM will be done in 2 weeks. We are going to do it like that. Is it for all subjects? Of course. 13th of July, I will be starting repeaters program. जिन्होंने एक बार पूरा syllabus finish कर लिया है. Those who have finished entire syllabus once, for them, it's going to be a rank improvement, rank booster program. And it's going to have intense practice of some beautiful problems, some unmatchable problems. My dear friends, total differential can also be used in one more very interesting manner. That in a cantilever beam, mechanical and civil engineers know that in a cantilever beam, the deflection at free end, the deflection at free end is written as WL cube upon 3EI. But suppose, and I can be written as, if the beam is having circular cross section, then I can be written as pi d power 4 upon 64. So I'm going to get 64 WL cube upon 3 pi e d power 4. But suppose load का जो वैल्यू हमें रिपोर्ट किया गया, उसमें एक ±1% का एरर है. भाई लोड मेजर ही करके बताया होगा कोई, मेजरमेंट में एरर हो ही सकता है. लेंथ भी मेजर करके ही बताओगे. अब 1 mm कम 1 mm ज्यादा तो आप ह्यूमन एरर. डाया, elasticity, all these are measured values. All these are experimentally tested values. And suppose they happen to have some error values, like W is having some error
of minimum plus minimum 1%, minimum minus 1%, I mean negative side minus 1 and पॉजिटिव साइड -1. लेंथ को मेजर करने में भी एरर हो गया 2% का. डाया को मेजर करने में भी एरर हो गया 1.5% का. इलास्टिसिटी को मेजर करने में भी एरर हो गया 2% का. Measuring W, L, D and E and some error happened. Plus minus 1%, plus minus 2%, plus minus 1.5% and plus minus 2%. Deflection में कितना error होगा? What will be the maximum error in estimated deflection? Maximum error in estimated deflection. Maximum error in estimated value of deflection. My dear friends, ध्यान से समझियो. Del y by del w will become 64L cube upon 3 pi e d power 4. Del y by del L will become 64W and 3L square upon 3 pi e d power 4. Del y by del E will become 1 upon x का डेरिवेटिव होता है minus 1 upon x square. So this will become 64W L cube upon 3 pi e square d power 4. 1 upon x power 4 का डेरिवेटिव होता है minus 4x power minus 4 minus 1 minus 4 and x power 5. So del y upon del d will become, with respect to dia, minus 64WL cube into 4 upon 3 pi e and d power 5 and d power 5. Now total change or total error in y. Total error in y can be expressed as partial derivative of y with respect to load into error in load. Partial derivative of y with respect to length into error in length. Partial derivative of y with respect to modulus of elasticity into error in modulus of elasticity. Partial derivative of y with respect to dia into error in dia. डिफ्लेक्शन 4 वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो हमने टोटल डिफरेंशियल को इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया. वी हैव एक्सप्रेस्ड टोटल डिफरेंशियल लाइक दिस, दैट y में एरर हो जाएगा y का लोड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इनटू लोड में एरर, y का लेंथ के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इनटू लेंथ में एरर, y का इलास्टिसिटी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इनटू इलास्टिसिटी में एरर, y का डाया के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू डाया में एरर. Now all these values we know. Del y by del w we know, del y by del l we know, del y by del e we know, del y by del d we know. 64 L cube upon 3 pi e d power 4 and del w. del y by del l भी मालूम है मेरे को 64W 3L square upon 3 pi e d power 4 into delta L. del y by del e भी मालूम है मेरे को 64 into W into L cube upon 3 pi e square d power 4
and one minus sign was also there. And इसके रिस्पेक्ट में भी मालूम है मेरे को 64 cube into minus 4 upon 3 pi e d power 5 and del d. Guys, now you take 64 cube upon 3 pi e d power 4 common. 64. Now you take 64 cube upon 3 pi e d power 4 common. 64 cube upon 3 pi e d power 4 common. Okay? So let's take 64 cube upon 3 pi e d power 4 common. Then यहाँ पर बचेगा del w upon w. यहाँ पर अगर मैं 64 cube common ले लूं तो delta L by L आ जाएगा with extra 3. Here if I take 64 cube upon 3 pi e d power 4, one extra elasticity is remaining in denominator. And also there is a minus sign. Also there is a minus sign and one extra elasticity is remaining in denominator. Here if I take 64 cube upon 3 pi e d power 4 common, then extra 4 is remaining and one extra dia is remaining. 4 is remaining and one extra dia is remaining. My dear friends, this was original deflection. This was original deflection. So, अगर मैं इसको now if I express, I'm very clearly having, if I simply multiply by 100, multiply by 100, multiply by 100, then this is percentage error. अगर मैं इसको multiply कर दूं 100 से, this is percentage error in y. If I multiply this with 100, this is percentage error in w. If I multiply this with 100, this is percentage error in length. If I multiply this with 100, this is percentage error in E. If I multiply this with 100, this is percentage error in dia. I get percentage error in y max value is equal to percentage error in load कितना given है 1%. Percentage error in length कितना given है 2%. Percentage error dia में 1.5% और elasticity में 2%. In W, there is a percentage error of 1%. In length, there is a percentage error of 2%. In D, there is a percentage error of 1.5%. In E, there is a percentage error of 2%. Okay? So, am I going to put them just like that? No. For maximum, if this is positive error and this is positive error, then this should be negative error and this should be negative error. Because one minus sign is there, one minus sign is there. Naturally, if there is maximum error in y will take place, if there is positive error in w and l, but there is negative error in e and d. y में maximum error तब होगा जब load और length में positive error हो रहा हो, लेकिन elasticity और dia में negative error हो रहा हो. So my dear friends, in this it is plus 1, in length it is plus 2, sorry, in length it is plus 2, in elasticity it is minus 2. क्योंकि जब आपको डिफ्लेक्शन में मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर देखना है
तो आपको वो कॉम्बिनेशन देखने होंगे जो सबसे ज्यादा एरर में रिजल्ट करें. When you are looking at the greatest error in deflection, then you will have to see that possibility which results into the greatest possible error in deflection. -4 into -1.5. So I'm gonna get 1 plus 6 plus 2 plus 6. That becomes 15%. In engineering applications, accuracy, therefore, is generally going to be very important, because if a function depends on 10 variables and one variable contributes only 1% error in measurement, the estimated value of final objective function could be as much deviated as 15% or 20%. रियल प्रैक्टिकल लाइफ में, इंजीनियरिंग में एक्यूरेसी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर एक फंक्शन, कोई भी रियल प्रैक्टिकल पैरामीटर 50 वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, 10 वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, और हर वेरिएबल अगर 1% एरर आपसे हो गई हर वेरिएबल को मेजर करते समय, तो जो आउटपुट वैल्यू आप एस्टिमेट करोगे हो सकता है वो 20-25% गलत आ रही हो. In real practical world, maintaining accuracy in measurement of input values is therefore very important, because even if one variable is deviated by 1% and the function depends on 10 such variables, then that function estimated value of that output function may be deviating by 20% or something like that. So this was total differential. My dear friends, ध्यान से समझियो. Another interesting problem that can be formulated on the basis of total differential is something like this. On the basis of total differential, one is the rate of change problem. We understood total differential. And total differential की basis पर एक प्रॉब्लम जो आपके सामने आ सकती है वो इस तरह की हो सकती है, rate of change problem. दूसरी प्रॉब्लम जो आपके सामने आ सकती है वो है error problem. Third problem that will come in front of you is that suppose z is a function of x and y, and suppose x and y further are the functions of r and theta. Third problem is functions of function, या फिर आप इसे partial derivative का chain rule भी कह सकते हैं. You can call it the chain rule of partial derivative. You can call it the chain rule of partial derivative. Let's suppose z is a function of x and y, and then x is a function of r and theta, and y is also a function of r and theta. Y is also a function of r and theta. How are you going to do this? इसको कैसे attempt करोगे आप? Well, I know that del z is equal to del z by del x into delta x plus del z by del y into delta y. And I know that del z is equal to del z by del x into delta x plus del z by del y into delta y. ये तो टोटल डिफरेंशियल मालूम है आपको. डेल्टा z is del z by del x into delta x plus del z by del y into delta y.
delta z is equal to del z by del x into delta x plus del z by del y into delta y. Now suppose I decide to divide this by delta r, divide this by delta r, divide this by delta r, and when I do all this, I decide to keep theta as constant. Now suppose I decide to divide this whole thing by delta theta, and delta theta, and when I do all this, I decide to keep r as a constant. पहले मैंने टोटल डिफरेंशियल लिख दिया डेल्टा z इज इक्वल टू del z by del x delta x plus del z by del y delta y. Delta z is equal to del z by del x delta x plus del z by del y delta y. फिर मैंने डेल्टा r से डिवाइड कर दिया एक बार और एक बार डेल्टा थीटा से. जब मैंने डेल्टा r से डिवाइड किया तो मैंने थीटा को कांस्टेंट रखा, और जब मैंने डेल्टा थीटा से डिवाइड किया तो मैंने r को उस समय कांस्टेंट ट्रीट किया. Cool? Now you tell me, delta z by delta r with theta constant represents what? With theta constant, delta z by delta r represents what? With theta constant, delta x by delta r represents what? With theta constant, delta y by delta r represents what? With r constant, delta z by delta theta represents what? With r constant, delta x by delta theta represents what? With r constant, delta y by delta theta represents what? They represent further partial derivatives. My dear friends, I rewrite them that I have delta z by delta r with theta constant is equal to del z by del x and delta x by delta r with theta constant, and delta z by del z by del y, and then delta y by delta r with theta constant, and second equation delta z by delta theta with r constant is equal to del z by del x, and then we have delta x by delta theta with r constant plus del z by del y, and we have delta y by delta theta with r constant. My dear friends, ध्यान से समझियो, दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव. ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है. ये पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है del z by del r. ये पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है del x by del r. ये पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है del y by del r. ये पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है del z by del theta. This is the definition of partial derivative del x by del theta. This is the partial derivative definition del y by del theta. So if I finally write, it's going to look something like this. Del z by del r is equal to del z by del x into del x by del r, and del z by del y into del y by del r. And del z by del theta is equal to del z by del x into del x by del theta, and del z by del y into del y by del theta. इन्हें कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स का चेन रूल. These are known as chain rule of partial derivatives. The mamla is very simple. Suppose we have z is equal to x plus y square minus xy, and x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Then calculate
partial derivative of z with respect to r and calculate partial derivative of z with respect to theta. Then calculate partial derivative of z with respect to r and with respect to theta. And it's going to be very simple. Del z by del r will become equal to del z by del x into del x by del r plus del z by del y into del y by del r. Del z by del x is nothing but 1 plus 0 minus y. Del x by del r is nothing but minus sine theta. Del z by del y is nothing but 0 plus 2y minus x. Del y by del r is nothing but sine theta. I'm very sorry. Del x by del r was simply as cos theta. Cool. So finally I get del z by del r is equal to 1 minus y multiplied by cos theta and 2y minus x multiplied by sine theta. Y can be replaced as r sine theta and x can be replaced as r cos theta. And then you can simplify this. One last thing, as far as partial derivatives are concerned, suppose u is a function of xy and v is a function of xy. Suppose u is a function of xy and v is a function of xy. U is a function of xy and v is a function of xy. Then we can very clearly find out del u by del x. We can find out del u by del y. And if v is a function of xy, we can find out del v by del x and del v by del y. We can find them out. But suppose आपसे कह दिया जाए del x by del u find out करो. But we can find them. We can find these values. But suppose I ask you that no, I want del x by del u. And I want del x by del v. And I want del y by del u. And I want del y by del v. Then how you are going to find them out? I'm not deriving it, लेकिन इसका भी final result total differential से ही हो सकता है. The final result can be obtained by total differential only. The final result can be obtained by using the formulas of total differential. But I'm certainly going to tell you the trick that आप जब del x by del u या del x by del v या del y by del u या del y by del v लिख रहे हो तो x जहां हो वहां y और u जहां हो वहां v लिखें. x जहां हो वहां y और v जहां हो वहां u लिखें. y जहां हो वहां x और u जहां हो वहां v लिखें. y जहां हो वहां x और v जहां हो वहां u लिखें. Wherever x is there, in cross you write y, and wherever u is there, in cross you write v. Okay? In cross you write v. And just divide this value by capital J. Just divide this value by capital J. Just divide this value by capital J. Where J is called Jacobian. J is called
Jacobian, where J is called as Jacobian, and Jacobian is defined as U with respect to X and V with respect to Y minus V with respect to X and U with respect to Y. This is the definition of Jacobian. Of course, X with respect to U seems to be like first with respect to first. But X with respect to V seems like first thing with respect to second thing. Similarly, Y with respect to V seems like second thing with respect to second thing. But Y with respect to U seems like second thing with respect to first thing. When it is first thing with respect to first thing, there will be plus sign. When it is first thing with respect to second thing, there will be minus sign. When it is second thing with respect to second thing, there will be plus sign. And when it is second thing with respect to first thing, there will be minus sign. I repeat for one last time that अगर आपको u x y का फंक्शन गिवन हो और v x y का फंक्शन गिवन हो और आप del u by del x या del u by del y या del v by del x या del v by del y तो फाइंड आउट कर सकेंगे इजीली. लेकिन अगर आपको del x by del u कह दिया जाए या del x by del v कह दिया जाए या del y by del u कह दिया जाए या del y by del v कह दिया जाए तो x के ऑपोजिट आएगा y और u के ऑपोजिट आएगा v. x के ऑपोजिट आएगा y और v के ऑपोजिट आएगा u. y के ऑपोजिट आएगा x और u के ऑपोजिट आएगा v. y के ऑपोजिट आएगा x, दिस इज फन, एंड v के ऑपोजिट आएगा u अपॉन Jacobian अपॉन Jacobian upon Jacobian upon Jacobian, where Jacobian is what? Where Jacobian is u with x and v with y minus v with x and u with y. Okay? पहला वेरिएबल u और v और x और y, जब पहला है तो प्लस, जब v का y के साथ है तब भी प्लस, y with respect to v plus u with respect to x with respect to u plus. But when it is u with respect y with respect to u minus, and when it is x with respect to v minus. Please do remember this little trick to find the reverse partial derivatives. I was expecting that today we will complete this second chapter. One little thing is remaining, maxima minima. So next week we will be doing the part 2 of this whole revision of calculus. I just hope that you enjoyed the session as much as I did enjoy. मुझे उम्मीद है कि आपने उतना ही एंजॉय किया होगा जितना मैंने एंजॉय किया. एंड अगर आप पूरी मैकेनिकल को एक बेहतरीन और सिस्टमैटिक तरीके से सीखना चाहते हैं, आ जाओ दोस्त. अनअकैडमी प्लस या अनअकैडमी आइकॉनिक आज और कल आपको मिल रहा है 20% डिस्काउंट, और मेरे साथ आखिरी कदम तक आप यूं प्रिपेयर करने वाले हो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स दैट आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. It's going to be such a wonderful journey that आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. यूज करो कोड MTLIVE और अभी के अभी सब्सक्राइब करो. अभी के अभी मेक श्योर दैट हिट करो यार, हिट करो. पापा से बोलो, पापा आज तक मैंने आपका मोबाइल में खर्च करवा दिया, मैंने आपका वीडियो गेम में खर्च करवा दिया, मैंने आपका बाइक में खर्च करवा दिया,
मैंने आपका इतना सारा खर्च इंजीनियरिंग में करवा दिया, लेकिन रिटर्न मैंने कुछ नहीं दिया है। आज मैं आपसे एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मांग रहा हूं जिसमें मैं अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करके आपको रिटर्न देने वाला हूं, और वो है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। क्योंकि मैं आपके साथ आपकी सफलता तक मजबूती से आपके साथ चलने वाला हूं, मजबूती से आपके साथ दौड़ने वाला हूं दोस्त। आई एम गोइंग टू रन विद यू विद लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कन्विक्शन। तो आ जाओ, जो सब्सक्रिप्शन एक साल का जो सब्सक्रिप्शन 39,000 में है, 20% डिस्काउंट के बाद वो 31,000 में मिलेगा आपको। आज और कल वैलिड है सिर्फ, टुडे एंड टुमारो इट इज वैलिड, नॉट मोर देन दैट। यू कैन इवन कॉल ऑन दिस नंबर टू चेक कि आप ईएमआई में भी ले सकते हो क्या, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच माय वंडरफुल पीपल, माय लवली पीपल। कीप रॉकिंग, keep scoring well, keep appearing in multiple tests. Sir, your book is great. क्या ही तो बात है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग इज ना आदर्श सिंगारी जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बैक वैक से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा गेट एग्जाम में। अभी आप ग्रेड अपनी मेंटेन कर लो अच्छे से, बैक वैक से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। There'll be no problem with back, huh? Okay, people. Thank you for being there. Keep rocking.